No basket. No basket, no glory, no bruises, no story. And that's been the scenario today. Welcome to the finals of the Elite Pro Basketball League Preseason 2023. It's going to be a fantastic encounter. So I'll say the first line. Check, check, test, check. Check, check. No glory, no bruises, no story. That's been the scenario for all these days, friends. Remember, history is about to be written today as we enter the last and final day of India's only 5v5 Pro League last and final preseason. Yes, it's time and your wait is finally going to get over as we have two of the best teams contesting against each other for the finals of Preseason 1 Elite Pro Basketball League. And without delaying any further, let's give the audience what they want and let's call in the first team, the Chennai TURBOS. Go, go. Go. Ay, ay. Court पे बिल्कुल मैं wild सारे opponent कर दिए side तिक्की पे तिक्की मैंने जमाई I'm just gonna posterize कोर्ट पे बिल्कुल मैं वाइल्ड सारे ओपोनेंट कर दिए साइड तिक्की पे तिक्की मैंने जमाई I'm just gonna posterize जमीन से ऊपर मैं ऐसा ही शूटर में कभी निशाना न चूकता ऑल मैं हूँ से आज जस्ट ब्रूटली जस्ट शेकिंग योर रूट्स मूवमेंट एक क्रूशियल है आसमान छू कर ये मैं तो मचाता हूँ Remember, they've put in all their heart and soul to get to this stage. The finals is what you're waiting for. Let's call upon their rivals, the Jaipur Giants. टैक्टिक ऐसी जो ना किसी ने सोची मेरा विनर माइंडसेट जैसे मैं हूँ कोबी वो बस फेंकते रह जाते ईट एंड दे लुक लाइक किड व्हेन वी प्ले दे लूज द ग्रिप दे डी के इस गेम के हैं हम जीते कोई सामने आता ना फ्री वे हमें दिखाता तेवर जो तीखे रिमेंबर यू गोना जस्ट लीव इट बने अलग ही हम मिट्टी के कोर्ट पे बिल्कुल मैं वाइल्ड सारे ओपोनेंट कर दिए साइड तिक्की पे तिक्की मैंने जमाई I'm just gonna posterize कोर्ट पे बिल्कुल मैं वाइल्ड सारे ओपोनेंट कर the head coach. Ma'am, finals day. Are you feeling any butterflies in the stomach? No, Not. not yet. No, we have played many matches. There's no point of getting nervous in any matches. Whoever plays best, they'll win the match. She's already a winner. She has no nervousness at all. Ma'am, any plan for the opposite team? What is the one thing that is missing in them that is an advantage for you? We cannot tell the team secret open, no? All right, one more question to Anna, Arvind Anna, the captain. आपको कैसे लग रहा है? आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो फाइनल मैच का? Yeah, we are doing match by match. We are improving our games. We are setting as a team. We have to play our best today. That's all. Finals है, एक last message दे दो जयपुर Giants को before going on court. All the best. Play well. That's an all the best for you. Over to Stalin. All right, then I'm starting with the head coach here for the Jaipur Giants. Sir, you're a character in yourself. You're very animated, always very energetic, marshalling the boys. What's your piece of advice today to them? I think only boys we have to win. The George creating everyone to play hard, play smart, and play together. Absolutely, sir. All these days have finally come to an end. Something that you're going to miss from the entire preseason?
Yes, yes, entire ambience, entire matches, and everything is we miss. Yes. All right, so thank you so much. We'll also head to the captain here, Prakash Mishra. Prakash sir, आज आप captain हो, last and final match. पूरी team के लिए क्या advice है? बस जोश के साथ खेलिए, खुल के खेलिए. Play your best game today, and all the best for the teammates. All right, we're ready to see that Josh in them, friends. Get ready as we kickstart the finals in a matter of 10 minutes. Stay tuned and don't go away. Live action begins. मैंने जमाई, I'm just gonna posterize. जमी से ऊपर मैं ऐसा है शूटर में कभी निशाना ना चूकता. All my hope से आज just brutal just shaking your roots. Movement है crucial है आसमां छू कर ये मैं तो मचाता हूँ धूमधाम. निशाना लीतल है ये तो बस पिघलते 3 pointers बस लूटता. सुन ले छोटे खेलूं गेम ना छोटी. बॉल निकालूं ऐसे रोके ना किसी के रोकी. टैक्टिक ऐसी जो ना किसी ने सोची. मेरा विनर माइंडसेट जैसे मैं हूँ कोबी. वो बस फेंकते रह जाते ईट एंड दे लुक लाइक किड व्हेन वी प्ले दे लूज द ग्रिप दे डी के. इस गेम के हैं हम जीते कोई सामने आता ना फ्री वे. हमें दिखाता तेवर जो तीखे रिमेंबर यू गोना जस्ट लीव इट. बने अलग ही हम मिट्टी के. कोर्ट पे बिल्कुल में वाइल्ड सारे ओपोनेंट कर दिए साइड. तिग्गी पे तिग्गी मैंने जमाई, I'm just gonna posterize. कोर्ट पे बिल्कुल में वाइल्ड सारे ओपोनेंट कर दिए साइड. तिग्गी पे तिग्गी मैंने जमाई, I'm just gonna posterize. गेम की पॉलिटिक्स से करे सप्रेस ना कोई साथ या बस मैं. पर हर सांस में लड़ते किस्मत को दे नटमैग. हो रखा मैं मटमैल ना फैमिली का ट्रस्ट है. खड़ा फिर भी डट के देता अपना 100%. Just hustler alone, king like James LeBron. Scott का अब मैं don. We thrashing, they just trash talk. Ball छापते ऐसी killer instinct. उनके जिगर फाड़ते फिर भी खड़े हम still. Making it rain थके point win. झंडे गाड़ते जीते clutch movement. कोर्ट पे बिल्कुल में वाइल्ड सारे ओपोनेंट कर दिए साइड. तिग्गी पे तिग्गी मैंने जमाई, I'm just gonna posterize. कोर्ट पे बिल्कुल में वाइल्ड सारे ओपोनेंट कर दिए साइड. तिग्गी पे तिग्गी मैंने जमाई, I'm just gonna posterize. कोर्ट पे बिल्कुल में वाइल्ड सारे ओपोनेंट कर दिए साइड. तिग्गी पे तिग्गी मैंने जमाई, I'm just gonna posterize. कोर्ट पे बिल्कुल में वाइल्ड सारे ओपोनेंट कर दिए साइड. तिग्गी पे तिग्गी मैंने जमाई, I'm just gonna posterize. तो आजा go go go. कोर्ट पे बिल्कुल में वाइल्ड सारे ओपोनेंट कर दिए साइड. तिग्गी पे तिग्गी मैंने जमाई, I'm just gonna posterize. कोर्ट पे बिल्कुल में वाइल्ड सारे ओपोनेंट कर दिए साइड. तिग्गी पे तिग्गी मैंने जमाई, I'm just gonna posterize. जमी से ऊपर मैं ऐसा है शूटर में कभी निशाना ना चूकता. ऑल मैं होप से आज जस्ट ब्रूटल है जस्ट शेकिंग योर रूट्स. मूवमेंट है क्रूशियल है आसमां छू कर ये मैं तो मचाता हूँ धूमधाम. निशाना लीतल है ये तो बस पिघलते 3 pointers बस लूटता. सुन ले छोटे खेलूं गेम ना छोटी. बॉल निकालूं ऐसे रोके ना किसी के रोकी. टैक्टिक ऐसी जो ना किसी ने सोची. मेरा विनर माइंडसेट जैसे मैं हूँ कोबी. वो बस फेंकते रह जाते ईट एंड दे लुक लाइक किड व्हेन वी प्ले दे लूज द ग्रिप दे डी के. इस गेम के हैं हम जीते कोई सामने आता ना फ्री वे. हमें दिखाता तेवर जो तीखे रिमेंबर यू गोना जस्ट लीव इट. बने अलग ही हम मिट्टी के. कोर्ट पे बिल्कुल में वाइल्ड सारे ओपोनेंट कर दिए साइड. तिग्गी पे तिग्गी मैंने जमाई, I'm just gonna posterize. कोर्ट पे बिल्कुल में वाइल्ड सारे ओपोनेंट कर दिए साइड. तिग्गी पे तिग्गी मैंने जमाई, I'm just gonna posterize. गेम की पॉलिटिक्स से करे सप्रेस ना कोई साथ या बस मैं. पर हर सांस में लड़ते किस्मत को दे नटमैग. हो रखा मैं मटमैल ना फैमिली का ट्रस्ट है. खड़ा फिर भी डट के देता अपना 100%. Just hustler alone, king like James LeBron. Scott का अब मैं don. We thrashing, they just trash talk. Ball छापते ऐसी killer.
अल्टीमेट बैटल यहाँ पर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज ये आखिरी दिन है इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग का। मुकाबला है जयपुर जायंट्स वर्सेस चेन्नई टर्बोस। क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है इन दोनों ही टीम्स का इस फाइनल्स तक पहुंचने के लिए। तारीफ करनी होगी चेन्नई टर्बोस की डिफेंस की, तारीफ करनी होगी जयपुर जायंट्स के अटैक की। तो एक डेडली कॉम्बिनेशन इन दोनों टीम्स का नजर आएगा फिलहाल एक दूसरे के खिलाफ। दोनों ही टीम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मौजूद हैं। दोनों ही टीम्स में वो खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने राज्य के लिए खेलते नजर आए। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मिक्स एंड मैच इस समय कोर्ट पर उतरेगा दोनों ही टीम्स के लिए। जयपुर जायंट्स के लिए दीपक चौधरी, जोगिंदर सिंह सारन जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, महिपाल सिंह ये भी इंडियन टीम के लिए खेल चुके हैं, प्रकाश मिश्रा का एक्सपीरियंस जयपुर जायंट्स के पास, और सत्यजीत जो कि टीम के बकेट के नीचे नजर आएंगे, टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटर। वहां पर दूसरी तरफ चेन्नई टर्बोस जिन्होंने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की। उन्होंने कल मुंबई स्टार्स को शिकस्त दी। सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट के डिफरेंस से उन्होंने जीत हासिल की और फाइनल में अपनी टिकट पक्की कर ली। नजर डालेंगे कि चेन्नई टर्बोस के लिए कोर्ट पर कौन से वो 5 खिलाड़ी होंगे जो पहले उतरेंगे। चेन्नई टर्बोस बिना किसी हार के यहां तक पहुंचे हैं। विजय पी, लोकेश एक बढ़िया बॉल हैंडलर, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट गार्ड तमिल सेल्वन, उसके अलावा एंटो बेतले वहां पे वो भी पॉइंट गार्ड की भूमिका निभाएंगे। अरविंद अन्नादुराई जो कि टीम के कैप्टन हैं, नंबर 18 पर नजर रखिएगा अपने टीम के कैप्टन, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो इस बास्केट के नीचे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इन दोनों टीम्स के बारे में कि दोनों की दोनों टीम्स अभी तक इस चैंपियनशिप में एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं। तो आज किसी ना किसी को तो हारना ही होगा। लेकिन क्या जश्न होगा उस टीम के लिए जो अपना सफ़र हर एक जीत के साथ फिनाले अपने नाम कर लेगी, टाइटल अपने सर पर पहनेगी। आज ये क्राउन इस EPB प्री सीजन 2023 का क्राउन अपने सर कौन पहनेगा, बस इसका थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। ये जर्नी जो शुरू हुई थी 14 मार्च को, जहां पर 16 टीमों ने चुनौती पेश करी है। 4 कॉन्फ्रेंसेस में इनको डिवाइड किया गया, ईस्ट कॉन्फ्रेंस, वेस्ट कॉन्फ्रेंस, ईस्ट सेंट्रल कॉन्फ्रेंस और साउथ कॉन्फ्रेंस। एक टीम निकली है ईस्ट कॉन्फ्रेंस से, ईस्ट सेंट्रल कॉन्फ्रेंस से, और एक टीम चेन्नई टर्बोस, मेन इन येलो वर्सेस मेन इन पिंक। ये एक एनकाउंटर है, जंग होगी दोनों के बीच। सितारों से सजी ये दोनों की दोनों टीम्स। अरविंद वहाँ पे चेन्नई टर्बोस के लिए, जो उन्होंने भारतीय टीम के लिए भी कई बार खेलते नज़र आए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में रहे, एशियन गेम्स उन्होंने खेला। उसके अलावा जयपुर जायंट्स में जोगिंदर सिंह जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स खेला है, एशियन गेम्स खेला है। उसके अलावा उनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का एक बेहतरीन एक्सपोजर है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा प्रकाश मिश्रा टीम के कैप्टन। तो ये जंग जयपुर जायंट्स और चेन्नई टर्बोस के बीच नहीं, ये जंग है दो स्ट्रॉन्ग कैप्टनसी के बीच में। जैसे कि कल मुंबई स्टार्स वर्सेस चेन्नई टर्बोस में देखने को मिला, वैसी ही कड़ी टक्कर होगी प्रकाश मिश्रा और अरविंद के बीच में। तो तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए। ये महामुकाबला जयपुर जायंट्स वर्सेस चेन्नई टर्बोस। मैं हूं नीति रावत और मेरे साथ में इस समय विजन। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये मुकाबला, और क्यों ना इंटरेस्टिंग हो, एक्साइटिंग हो, ड्रामा होगा, एक्शन होगा, क्योंकि ये आखिरी मुकाबला है। ये अल्टीमेट बैटल होगा जहां पर जयपुर जायंट्स अपने सॉक्स पुल अप करके आएंगे चेन्नई टर्बोस के खिलाफ। Absolutely, like you rightly mentioned, both these teams have been excellent in the form that they have showcased so far in this preseason. And the beauty of this preseason is that we have a knockout phase as well. So it's not just typical preseason leagues that we have seen in the past, but also that we have someone who's going to go home with a win, right? And that makes a huge impact when it comes to motivation, that when it comes to challenging yourself to take your game to the next level, and the confidence that it gives you, that looking at the sides that were in play, we guys were the best. And that's what will be getting drilled into this Chennai side by Prasanna, their coach and manager, calling that team in and asking Arvind, the captain there, the tallest man on the court for them, giving them his piece of advice. At the other end, Team Jaipur here,
if you look at this side, will depend heavily on these two players, number 4 and number 5, Joginder and Mahipal. Whereas Chennai will look to their tall men, Arvind and Vijay, number 4 and number 18, to lead the place for them. It's going to be an interesting game. Two tactical elements here to keep in mind. Chennai would like to slow the game down a lot more and play through their tall pivots, whereas Jaipur will like to rely heavily on their transition basketball and not allow Chennai to settle in on the defense as well, because there's too much height in the paint for Chennai. So it's going to be a tactical battle. It's going to be interesting to see how both these coaches respond to the challenges that are there in front of them. And this man needs to have a great game for Jaipur Giants. Prakash, one of the veterans in this side, but when you see him move, when you see him play, you don't think that, he is as old as he is. Been around for a very long time. We are being very careful not to reveal his age here. But if you Google him, I'm sure you'll get to know. Prakash, Mahipal, Deepak will need to play out of their socks. The outside shooting and the perimeter shooting for Jaipur really needs to come to the fore today. Because inside the paint, Arvind and Vijay will be a formidable combination. You can see Arvind limbering up, sending that message. And right away, you can see that height difference between these two gentlemen. Deepak Chaudhary there for the jump ball with Arvind. And as expected, Chennai ball. Pull-up jumper from 45. Netting it clear right away. Good ball movement. Immediately receiving the ball at the 45 and unleashing a 3. Let's take a look at that fast basket. Neeti, such quick movement. Grabs the ball, immediately sends it to the 45. And he's red hot. तो वहाँ पे तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग वार्म अप किया, मुकाबले में एंट्री कर ली है. हम अभी कमेंट्री बॉक्स में सिर्फ वार्म अप शुरू हुआ था, उससे पहले पलक झपकते ही यहाँ पे 3 का तीर लगाया है, 3 पॉइंटर्स लगा दिया है यहाँ पर चेन्नई टर्बोज ने. तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से वो मैदान पर नजर आएंगे जयपुर जॉयंट्स के खिलाफ. आप वहाँ पे क्लॉक देख सकते हैं कि 11-11 मिनट का जो है ये क्वार्टर खेला जाएगा. एंटो बेथले का वहाँ पास लोकेश के लिए और ये 3 पॉइंटर. तो 3 के साथ शुरुआत की है यहाँ पर चेन्नई टर्बोज ने. ये पहले 3 पॉइंट सिर्फ 5 सेकंड्स में उन्होंने ये अटेम्प्ट ले लिया. पलक झपकते ही यहाँ पर 3 पॉइंट्स अटेम्प्ट किए और कन्वर्ट भी कर लिए. फिलहाल मौका है जयपुर जॉयंट्स के लिए. एक स्ट्रॉन्ग मैन मार्किंग की कोशिश तो है. जोगिंदर ने पास दिया था वहाँ पे नंबर 14 जो कि जयपुर जॉयंट्स के. एक और 3, लेकिन वहां पर जयपुर जॉयंट्स पे दबाव बनाने की कोशिश शुरुआत से ही है. लॉन्ग रेंज शूटिंग जो है बैक टू बैक हुई है चेन्नई टर्बोस के अकाउंट में. 6 पॉइंट्स ऐड हो गए हैं. कमाल की शुरुआत की है चेन्नई टर्बोस ने. वहां स्क्रीन लगाने की कोशिश सत्यजीत की और जवाब देने की कोशिश थी, लेकिन महिपाल अभी फायदा नहीं मिला है. जोगिंदर तेजी से अंदर आए हैं, पेंट में आने की कोशिश, पास बाहर निकाला. 90 डिग्री से प्रयास है. दूसरा अटेम्प्ट महिपाल का, लेकिन अभी भी खाली हाथ लौटना होगा चेन्नई टर्बोज. 2 3 पॉइंटर्स लगाए हैं शुरुआती क्षणों में ही. इससे आप उनके कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगा लीजिए. उन्होंने कल कमाल की जीत हासिल की है. मुंबई स्टार्स को उन्होंने सेमीफाइनल्स में बाहर किया और फाइनल्स में अपनी जगह पक्की की. फिलहाल मौका है चेन्नई के लिए. एंटो बेथले बचा लिया है वहां पे. विजय लोकेश विजय पेंट के अंदर आए हैं. फाउल निकालने की कोशिश, लेकिन बढ़िया इंटरसेप्शन, बढ़िया स्टील के साथ में इस बार महिपाल क्या तेजी से आएंगे. बॉल हॉक करने की कोशिश, बाउंस पास निकाला है
लेकिन एक बढ़िया डिफेंस, एक स्टील, एंटो बेथले पास दिया है वहां पर विजय। व्हाट एन अंडरस्टैंडिंग, व्हाट अ पार्टनरशिप, कमाल की पार्टनरशिप। फाउल निकालना चाहते थे प्रकाश मिश्रा, अपने एक्सपीरियंस को पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहेंगे। तो एक तरफ युवा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है तो दूसरी तरफ दो एक्सपीरियंस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जोगिंदर और साथ में प्रकाश मिश्रा। ये जोड़ी जो है हावी जरूर होगी। फिलहाल शुरुआत में अभी तक खाता नहीं खुला है और इस समय फ्री थ्रो लाइन पर प्रकाश मिश्रा। तो चलिए अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। पहला फ्री थ्रो उन्होंने कन्वर्ट किया। चैरिटी स्ट्राइक पर ये स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है प्रकाश मिश्रा के लिए। दोनों फ्री थ्रोज एंटो बेथले, लोकेश, विजय। तो एक रोटेशनल प्ले की कोशिश वहां पे चेन्नई टर्बोस की ओर से देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी फायदा नहीं मिला है। एंटो बेथले, अरविंद अब अंदर आए हैं, पेंट के अंदर आए हैं। 2-on-1 का डिफेंस और आखिरकार क्या निकाल पाएंगे। चलिए वहां पे रिबाउंड कलेक्ट किया है। 2-on-1, 3-on-1, मुझे लगता है कि पूरे की पूरा जो स्क्वाड है जयपुर जायंट्स का वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद के ऊपर था। अभी कोई फायदा नहीं मिला है, खाली हाथ लौटना होगा। मौका है जोगिंदर सिंह के लिए। जोगिंदर सिंह नंबर 4 भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में नजर आए, एशियन गेम्स में नजर आए। अच्छा खासा एक्सपीरियंस जोगिंदर के पास है, काफी लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आए जोगिंदर। और इस समय जयपुर जायंट्स के लिए एक जबरदस्त एडवांटेज है जोगिंदर का होना। वो वही खिलाड़ी है जिसने अपने लास्ट लीग एनकाउंटर में बजर बीटर हिट किया था। फिलहाल इस समय खाली हाथ लौटना होगा। महिपाल बॉल बनाए रखा है, जोगिंदर के लिए पास, अंदर आने की कोशिश, डिफेंस को बॉक्स आउट करना चाहते हैं प्रकाश मिश्रा। और ये 2 पॉइंट टॉप ऑफ द की से, ये 2 पॉइंट प्रकाश मिश्रा के लिए। तो स्लोली स्टेडीली विजन यहाँ पर अब जो है जयपुर जायंट्स जो है वापस आना शुरू कर दिया। क्या कमाल की करारी तगड़ी वहाँ पे शुरुआत की थी चेन्नई टर्बोस ने, लेकिन पिछले कुछ जो 2 मिनट गए हैं उसमें चेन्नई ने कन्वर्ट नहीं किया है। That's right, as you can see on the screen, immediately double teaming Arvind, and here's an opportunity on the fast break. Joginder now out of the play. Can Chennai use this numerical advantage at the other end? Arvind getting the roll from the ring. In and out. Like they say in the north, chakri firti hui wahan ring pe. And then eventually it goes in. Mahipal sizing the opportunities in front of him. Prakash now with the ball. Fakes, drops his shoulder. Pull up jumper, this time a little short. Chennai, Anto once again wanting to call the play from the back. Lokesh. Anto feeds Arvind there. Looking for the free man. Lokesh driving in into the paint. Releases with the left. Offensive board for Chennai. Anto under pressure. Fakes the first. The second help was arriving. But in spite of that hand in his face, converting for yet another 2, taking his team's score to 12. And once again, Chennai showcasing their mettle. Definitely the best defensive side in this tournament. Using that advantage they have in the paint, it's always intimidating to drive in against someone like Arvind and Lokesh while they're guarding the paint. Perimeter shooting very crucial for Jaipur. The Giants there not getting their radar straight. It's early days, it's the first quarter. Both these teams will be sizing each other up. Here comes Prakash. Wanting to play on the transition, but this time Chennai settling into a good defensive rhythm. Prakash with the ball. Asking for a screen. Pull-up jumper. Is there a call by the official? Yes, it is. Dragged his foot. Couldn't stop in time.
Anton. Once again using Arvind's height there, playing off the tall man. Arvind, they should probably let him shoot from here. You don't expect him to convert, neither did I. Proving all of us wrong, converting that 3, 15-4. It's already 11-point game, Neeti. विजन, ये एक अच्छी रणनीति है जयपुर जॉयंट्स की कि उन्होंने आज रोक के रखा है अरविंद को। वो पेंट में उनको अंदर नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पेंट में उनका काफी स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन है। फिलहाल महिपाल इस समय 3-point लाइन से नो कन्वर्जन, और हम जिक्र कर रहे थे अरविंद का वो 3-pointer जो हमने देखा है। फिलहाल यहाँ पर ओपन बकेट, ओपन अपॉर्चुनिटी, ये सुनहरा मौका है, ये गोल्डन चांस है अरविंद के लिए, और इससे कहाँ ही चूकते वो। ये 2 पॉइंट, और अभी तक अरविंद का वो जो 3-pointer था वो जो एक तरह से मेमोरी में रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि वैसे चांसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं अरविंद की ओर से। उन्होंने सोचा कि अगर अंदर नहीं आने देंगे तो क्या मैं बाहर से अटेम्प्ट नहीं करूंगा। आज वो बाहर से भी शूटिंग करते नजर आने वाले हैं, क्योंकि वहां उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है कि मैं 3-pointer लगाने वाला हूं। 17-4 का स्कोर है, एक अच्छा खासा डिफरेंस जो है बना लिया है पहले क्वार्टर के दौरान, और 5.5 मिनट का समय बाकी है इस पहले क्वार्टर की समाप्ति में। जयपुर जॉयंट्स के डगआउट में थोड़ा सा जो है टेंशन ज़रूर होगा, वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूर होगा, क्योंकि शुरुआत है और जैसे उम्मीद थी जयपुर जॉयंट्स को शुरुआत की, वो प्रेशर जो है पहले 2 पॉइंटर्स ने ही बना दिया था चेन्नई टर्बोस ने जयपुर जॉयंट्स के ऊपर। Absolutely, what a brilliant start for Chennai, right? We were all expecting the play to go through Arvind in the initial plays. It will go through the paint, but they shocked everyone, immediately launching those 3-point attacks from outside and converting those 2. And that changed everything because Jaipur was sagging back, trying to defend the tall men in the paint. And then when Jaipur started stepping out, Chennai started feeding the tall men inside. Here comes Joginder driving in. Nice bounce pass there. This is the kind of combination play that will work for Jaipur. The Giants need a lot more of this. Anto, picture of calmness. In the paint, using that height. Off the glass for yet another 2. Joginder asking for a screen. Here comes the screen. Beats his man. Looking for a pick and roll. Confusion there. And good combination play there. The 2 combining really well. Location Tamil Selvam. That's the kind of combination play that wins you matches. Both on the offense and the defense. Tremendous pressure here on the Giants. Difficult attempt there. Difficult attempt. Probably Chennai would have been good to allow him to take that attempt. He's on his weaker side. Joginder prefers his right. He was on his weaker side, and that also, it was an extended release. Probably should have just let it be. The only thing, Neeti, that can go wrong for Chennai is if Arvind gets into foul trouble. So that's something that they'll need to be careful about. And if Jaipur Giants are thinking it through, they will try to go up against Arvind and get him to foul them. Because we have, as part of the tournament format, we have moved to 44 minutes, but we still are playing with the 5-foul rule. So it's interesting if the teams can leverage that to their advantage. बिल्कुल सबसे ज़्यादा फोकस जो होगा अरविंद के ऊपर ही होगा। जयपुर जॉयंट्स की सारी प्लानिंग जो है अरविंद के आसपास ही होगी। फिलहाल इस समय मौका है चेन्नई टर्बोस के लिए, वहां पर ये टर्नओवर। लोकेश बिल्कुल खुश नहीं है अपने इस एक्शन को लेके, और अब बॉल जो है वापस लौट कर आई है जयपुर जॉयंट्स के पास। इनबाउंड का मौका मिलेगा एंड लाइन से। समय महिपाल नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं महिपाल भी, तो टीम के पास में एक्सपीरियंस की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक्सपोजर की कोई कमी नहीं है, और फिलहाल सिर्फ इस समय इंतजार है थोड़ा सा स्कोरबोर्ड में और ऐड करने का। महिपाल पास दिया है वापस लॉन्ग रेंज, ओह इन एंड आउट, वहां रिजेक्ट कर दिया है इस बकेट को। एंटो बेतले, एंटो बेतले वहां पे स्क्रीन की डिमांड करते हुए रवि कुमार इस समय कोर्ट पर आए हैं। बकेट के नीचे ये 2 पॉइंट का प्रयास, अभी भी बॉल बचाए रखा, और आखिरकार अरविंद
बड़ी देर बाद वो पेंट में नजर आए हैं। इतने ट्रैफिक के बीच में अरविंद का ये स्कोर निकालना, ये दिखता है कि अब उन्होंने डिफेंस को बॉक्स आउट करना शुरू कर दिया है, डिफेंस को डॉज करना और डिच करना शुरू कर दिया है। दीपक चौधरी ने वहां इनवाइट तो किया अरविंद को, आइए गलती कीजिए। इनबाउंड का मौका अपने ऑफेंसिव जोन में इस समय जयपुर जायंट्स के लिए। जोगिंदर के पास बॉल, नंबर 4 महिपाल के लिए पास, उनके सामने तमिल सेल्वन, आइए स्क्रीन लगाई है वहां पे नंबर 44 जयपुर जायंट्स के लिए। भाग्यांश इस समय कोर्ट पर आ चुके हैं, माइनस से ये अटेम्प्ट, लेकिन कोई फायदा अभी नहीं मिला है। तमिल सेल्वन इस समय बॉल के साथ, एंटो बेथले, उनके सामने प्रकाश मिश्रा। अपना मैन कितना टाइट मार्क किया हुआ है, काफी क्लोज मार्किंग, सांस भी नहीं लेने देंगे क्योंकि जहां डिफेंस छूटा वहां ऐसे नतीजे सामने आएंगे। लेकिन चेन्नई ये बखूबी जानती है कि कब अपने मैन को फ्री करवाना है, ऐसे चांसेस बनाने हैं, ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं, ये ओपनिंग क्रिएट करनी है अपने लिए। अलग ही रंग में इस समय मैन इन येलो, प्रकाश मिश्रा अभी भी जदोजहद इस 2 पॉइंट के लिए। बॉल निकालने की कोशिश में ऑफेंसिव रिबाउंड कलेक्ट करना चाहते थे, लेकिन पोजेशन जो है गवा दिया है। और अब नंबर 12 रवि कुमार, एक और एक्सपीरियंस खिलाड़ी फिलहाल इस समय चेन्नई टर्बोस के लिए। एंटो बेतले, लोकेश, एंटो, लोकेश, वहां डिफेंस को बॉक्स आउट तो किया है, रवि कुमार के लिए मौका बनाया है। एंटो अब पेंट में एंट्री की कोशिश और विजन बहुत काम, कंपोज्ड, बहुत ही बैलेंस और बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ जो है परफॉर्म किया एंटो बेतले। अपनी टीम के पॉइंट गार्ड हैं और जैसे कहते हैं कि पॉइंट गार्ड द बैकबोन ऑफ द गेम, वो उन्होंने प्रूव किया है। क्या प्ले मेकर है, क्या कमाल का प्ले बनाते हैं और जब स्कोर करने पे आते हैं तो अपनी टीम को बिल्कुल भी निराश नहीं करते हैं। Absolutely, Anto is special, and what makes a feeder look good? The feeder looks good when the off-the-ball movement is really up to the mark, and he's really blessed with a couple of guys on his team who move really well off the ball. If you look at Lokesh, for example, always continuously creating space for himself, and within the paint, Arvind has all the experience. He's always moving. Even if you can look on his screen, he's a tall pivot guy, but he's at 45, keeping himself free, giving the ball handler the opportunity to find him at all times. That's what you want in your side. If you're a great feeder, there needs to be enough off the ball movement. So turnover here, an opportunity for the Giants to get their score into a double digit. Stuck on 8 for a very long time. It's almost going to be a 20-point difference, and they'd like to arrest this lead right now. Otherwise, this position from the first quarter itself will be extremely dominant. Joginder Singh needs to come to the party. He needs to be present. He needs to lead this team from the front. Combining really well. A long-range effort working out for the Giants. Good movement there in the paint. Arvind denied on the first occasion, and this time getting the foul and count. Arvind, the captain, will be going to the free throw line. 29-11. Huge lead now. 18 points. पहले क्वार्टर में 18 पॉइंट्स की लीड चेन्नई टर्बोस के लिए। अच्छी खबर है इस क्वार्टर नंबर 1 में, ये अल्टीमेट डे है, अल्टीमेट बैटल इस समय चेन्नई टर्बोस वर्सेस जयपुर जायंट्स। और इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग प्री सीजन 2023 टैगलाइन दम है तो आजा, और आज जितना भी दम है वो इस मुकाबले में डालना ही होगा। कौन सी टीम होगी जो क्राउन अपने सर पर पहनेगी इस प्री सीजन का? अरविंद इस समय चैरिटी स्ट्राइप पर टीम के कैप्टन हैं। 2+1 की का मौका वहां पर उनके पास था। पहला 2 पॉइंट का कन्वर्जन, वो बकेट काउंटेड, और उसके बाद एक फ्री थ्रो, तो 3 पॉइंट उन्होंने और ऐड कर लिए। और अब चेन्नई टर्बोस 30 के पॉइंट के साथ, क्या जबरदस्त स्टील है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
लोकेश, वन मैन आर्मी, उन्हें किसी की जरूरत अभी नहीं है, अकेले ही वहां पे स्टील किया, बढ़िया इंटरसेप्शन और उसके बाद 2 पॉइंट का कन्वर्जन। ये पास है अंदर आने के लिए रवि कुमार का, ये बेहतर स्टी एंटो बेतले, एक बार फिर लोकेश, बैक टू बैक ये 4 पॉइंट्स, पिछले 6 सेकंड्स में 4 पॉइंट्स अपनी टीम की किटी में ऐड कर देना। क्या कमाल का परफॉर्मेंस है चेन्नई टर्बोस का, क्या कमाल का कॉन्फिडेंस है, क्या कमाल के कलर में है, अपने पूरे रंग में है ये पीला रंग। दीपक चौधरी अंदर आने की कोशिश, एक बार फिर बकेट ने रिजेक्शन। एंटो बेतले, कुछ आखिरी सेकंड्स बाकी हैं इस पहले क्वार्टर की समाप्ति में, एक अच्छा खासा मार्जिन जो है बना लिया है चेन्नई टर्बोस ने। इन एंड आउट अरविंद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जयपुर जायंट्स आज किस तरह से खेल रहे हैं चेन्नई टर्बोस के सामने। कमाल का परफॉर्मेंस है ये, जबरदस्त परफॉर्मेंस चेन्नई टर्बोस का। पहले क्वार्टर में 36-11 का स्कोर, 47 पॉइंट्स पड़े हैं पहले क्वार्टर में, जिसमें 36 जो है चेन्नई टर्बोस के हैं। तो विजन, इसका मतलब ये हाई स्कोरिंग मुकाबला तो है, लेकिन चेन्नई टर्बोस के लिए हम क्वार्टर को हाई स्कोरिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ दोनों टीम्स की बात होगी कि जयपुर जायंट्स ने आखिरकार इस क्वार्टर में किया क्या है। सिर्फ और सिर्फ 11 पॉइंट्स, जिसमें जोगिंदर के 2 3 पॉइंटर्स हैं। 6 पॉइंट्स जो है जोगिंदर ने डाले हैं, यानी सिर्फ 5 पॉइंट्स बाकी के खिलाड़ियों के। Absolutely a lopsided first quarter here. We were expecting this to be a strong performance from Chennai, but we weren't really sure that it's going to be this dominant. Jaipur need to huddle up, and these kids are enjoying this finals. What an amazing last 6 days we've had, Neeti. The crowd enjoying every moment. In fact, the slam dunk competition, wow! People enjoyed every slam dunk there. And the kids especially, what an amazing moment it is for them when they're getting to experience the eliteness of basketball in this country. This country demands a league. It wants a league. It wants professionalism to come into the basketball sport, because at the school level, at the college level, there is so much of enthusiasm when it comes to basketball, but it doesn't translate to that professional stage, and the league has the ability to do that. We will have a basketballing culture in this country that goes beyond your memories from school and college. But right now, it's to talk about the finals. 11 points for Jaipur Giants. This side in pink need to do something different. They've had a tough time in this first quarter. They need to go back to the drawing board, use this timeout that they've taken, figure out what they need to do different. They need to find a way to score. It's not so much about the defense. Yes, the defense looks bad because Chennai, the Turbos, have scored 36 points, but it's also about your offense. You cannot be failing at both sides of the court. You need to be effective at one side, probably the defense, and then you need to perform in the offense as well. Anto now with the ball for Chennai, taking his man in off the glass. Good defensive rebound. Here comes Jaipur Giants. Joginder now on the dribble, pulling up from way outside once again. Yet another 3. If there is some strategy that they need to play, the strategy needs to be this: use Joginder more. At the other end, an opportunity for Chennai, not getting the call from the official. Here comes Joginder. Mahipal now. The outside shooting needs to work. Finding Joginder once again. Takes his man on. Mahipal on the dribble, finding his way into the paint. Good defensive hustle, creating some space for Prakash. No luck from the ring. Transition now. Pull-up jumper. Can he nail it? Yes, he can. Number 14 for Jaipur, Satyajit now. Nailing yet another 2 for the side. There we have the replay for you. Completing that attempt. Quarter 2. Joining me to cover the live action, Stalin. Thank you so much, Vijan. It's been a pleasure here listening to you guys. You've been energetic there in the commentary box, and I guess we can continue to do the same. I have with me alongside Abhyuday Yadav,
who's been playing for the Goa Waves all this time. We'll chat with him as well. Meanwhile, Lokesh here from Team Chennai trying to get the ball rolling. At the same time, we have the Jaipur Giants currently at 16. Abhyuda, you've been playing this game for so many years. What is different about the Elite Pro Basketball League preseason? Elite Pro Basketball League का प्रीसीजन एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो यंग प्लेयर्स को और पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को एक जगह पे साथ लेके आता है ताकि वो अपना टैलेंट शो कर सकें। और बाकी इस मैच के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे दो अलग तरीके का बास्केटबॉल खेलने वाली टीम्स आपस में आमने सामने हैं, जिसमें चेन्नई के पास अंदर से खेलने की, इनसाइड गेम खेलने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और जयपुर के पास अपने पास स्पीड यूज़ करके शूटिंग गेम खेलना है। लेट्स सी कि क्या होता है आगे। जो एक अच्छी एक स्ट्रैटेजी होती है इस गेम में, जैसे आपने बोला इनसाइड शूटिंग या अगर आप प्लेयर को मैन टू मैन मार्क कर रहे हो या आप जोन डिफेंस कर रहे हो, व्हाट डू यू थिंक शुड टीम जयपुर हियर नाउ एग्जीक्यूट? कौन सी प्लान के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि जो स्कोर हम देख रहे हैं ऑलरेडी जयपुर 17 पे है, चेन्नई बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो आपके हिसाब से या आपके अनुमान से जो आपने बास्केटबॉल खेली है, आपको क्या लगता है कि विच प्लान विल वर्क? जयपुर टीम को अपना गेम थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा, उन्हें फास्ट ब्रेक के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। उनके पास एक तेज़ टीम है क्योंकि वो साइज़ में थोड़े इन्फीरियर हैं चेन्नई की टीम के सामने। अरविंद अन्नादुरई के साइज़ को आप मैच नहीं कर सकते हो इस लीग में। इस टाइम पर कोई भी उस जितना टैलेंटेड बंदा नहीं है हमारे पास। सो जयपुर को अपना थोड़ा शूटिंग गेम एंड फास्ट ब्रेक पे थोड़ा पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने पॉइंट्स को वो करें, स्टील करें, पास को इंटरसेप्ट करें। एक बहुत अच्छी स्टील महिपाल द्वारा। प्रकाश मिश्रा का एक 3 पॉइंटर मिस हुआ और एक किक बॉल। There it is, Prakash Mishra. Like he was explaining us, Abhyuda Yadav. Remember, it's so important to execute those plans at every given point here. Once again, Team Jaipur, they'll have to try and come back. Constant passing, that's the one thing that they are doing. Not able to convert. Mahipal Singh this time. That's what I'm talking about. Annadurai right below the basket. Now a pass here. Lokesh. No look there for Naveen Mishra. He's been given a chance. Wonderful technique here from the head coach, Miss Prasanna. She's enjoyed the way he's playing and she says, hey boy, take it. Take the opportunity and prove yourself. आप क्या कहना चाहोगे अभ्युदा? नवीन मिश्रा को प्रसन्ना मैम ने एक और अपॉर्चुनिटी दी है। सब गेम्स में अभी तक वो नहीं खेला है, पर सेमीफाइनल में उसकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी उसने ग्रैब की है और अभी फाइनल्स में भी उसको एक मौका दिया गया है। मेरे हिसाब से प्रसन्ना मैम का असली ट्रम्प कार्ड है। उन्होंने उसको छुपा के रखा। एक बहुत फिट प्लेयर है, काफ़ी तेज़ गेम खेलता है, उसको एंड तक छुपा के रखा। कल सेमीफाइनल में हमने देखा उसने कितना अच्छा खेला। 2 मोमेंटम शिफ्टिंग डंक्स भी मार के दिए टीम के लिए और अब आज भी उसको मौका मिल रहा है। आई होप कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेट्स सी। प्रकाश कॉलिंग फॉर अ स्क्रीन और ये बहुत अच्छा स्क्रीन एंड रोल, गुड शॉट। सत्यजीत छपराना फॉर यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर वो ऐसे खेलते जाए, if this is the same kind of technique that Jaipur can bring, I'm sure Oliot cover कर पाएगी। 20-36, they're going at a very good pace here. Lokesh this time on the ball and to Betley. Looking for someone there, he has Vijay. Look at the constant movement. Not able to screen and another very good point. Vijay here for the Chennai Turbos. The Turbos are getting charged. Joginder Singh Saharan. 1-2 dribble, goes for a 3-pointer. Walala, another one here. This is Jaipur Giants at their best. अभी तक क्या आपको लग रहा है वो इस गेम में वापसी कर पाएंगे? बिल्कुल, बास्केटबॉल के अंदर कोई भी लीड बहुत बड़ी नहीं होती और जिस तरीके से हमारा गेम है उसके अंदर हमने ट्रम्प कार्ड का भी रूल अप्लाई किया हुआ है, तो एंड में भी आप इतनी बड़ी लीड्स को कवर कर सकते हो। 2 मिनट का टाइम भी बहुत है आपकी टीम के लिए 10 से 15 पॉइंट को कवर करने के लिए। और महिपाल बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए और काफ़ी अच्छी ड्राइव इन, एक आउटलेट पास। दीपक अब ढूंढते हुए जोगिंदर को, जोगिंदर प्ले को सेट कराते हुए एक और बार स्क्रीन एंड रोल और सत्यजीत छपराना के ऊपर फाउल। Screen and roll, very nice here. Remember, tried to get that pass between the two defenders and there was a backdoor cut as well that would have come in. But an opportunity here, a foul that's been given here to the Jaipur Giants. They are turning on the ante, upping the heat. 23-38. First one here converted for the Giants.
Maximum amount of points are required here. Satyajit Chaprana. Remember, he's been bought in here for the Jaipur Giants from the standby list. Opportunity for him to prove himself. Joginder Singh Saharan, basket received. Look at the enthusiasm. Look at the energy of friends. Massive, massive point. It can be a turnaround. And surely it is. Watch that. Superb stuff. Watch Jogi there. He's excited and animated. क्या कहना चाहोगे इस एनर्जी के बारे में अभियुदा? इसी एनर्जी से टीम को खेलना होगा अगर उनको इस गेम में वापसी करनी है. गेम में कोई भी लीड ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 11 पॉइंट की लीड है और टाइम बहुत ज़्यादा है जयपुर की टीम के पास काम करने के लिए. अब टाइम आउट लिया है प्रसन्ना मैम ने क्योंकि ये मोमेंटम शिफ्टिंग प्लेज हो सकते हैं. एक फाउल हुआ, उस पर एक फ्री शॉट कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ऑफेंसिव रिबाउंड भी मिला और उस पर एक बहुत अच्छा 3 पॉइंटर मारा जोगिंदर ने. अब देखते हैं प्रसन्ना मैम इसको कैसे प्लान आउट करती हैं कि डिफेंस को क्या करना है और आगे का प्ले क्या रहता है उनका. Absolutely. There is one strategy. जैसे आपने बताया कि टाइम आउट लिए प्रसन्ना मैम ने, मोमेंटम ब्रेक कर रहे हैं उसके साथ. ये सेम चीज़ अगर जयपुर के हेड कोच मिस्टर सेतु लेते, या if you would have taken this time out when team Chennai were leading in the first quarter, do you think it would have made a difference? क्योंकि बहुत difference आता भी 8 points to 20 points, 4 points to 17 points. I guess at that time एक भी टाइम आउट नहीं लिया गया जयपुर की तरफ से. Do you think it's going to affect them? ये हर्ट हो सकता है? थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, लेकिन हमको कोच के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा. क्या पता उनको ये दिख रहा हो कि मुझे इन टाइम आउट्स की ज़रूरत बाद में पड़ सकती है गेम में, क्योंकि चेन्नई की टीम बहुत स्ट्रांग है. उनको दे आर कमिंग ऑल आउट ऑन जयपुर. तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से कोच अपने टाइम आउट्स को यूज़ करते हैं ताकि उनके प्लेयर्स को रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा ब्रेक मिल सके, मोमेंटम को तोड़ सके सामने वाली टीम के, एंड किस तरीके से चीज़ों को प्लान आउट करना है वो देख सकें. और नवीन मिश्रा का एक और शॉट, बहुत ही पावरफुल शॉट है. जोगिंदर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए हाई पिक एंड रोल के लिए सत्यजीत छपराना. जोगिंदर का एक आउटलेट पास, महिपाल का 3 पॉइंटर लेकिन मिस. अरविंद अन्नादुरई ने रिबाउंड लेके आगे बॉल बढ़ाई. प्रकाश का एक बहुत अच्छा स्टील. सत्यजीत छपराना के पास बॉल, दोबारा से सेट प्ले करते हुए प्रकाश. जोगिंदर को बॉल दिया उन्होंने. जोगिंदर ने ड्राइव करके सत्यजीत को पास दिया. सत्यजीत के पास बॉल, सत्यजीत का एक बहुत अच्छा मूवमेंट, पर ये शॉट मिस हुआ और बॉल बाहर जाती हुई कोर्ट के. रेफरी का डिसीजन कि बॉल देंगे वो चेन्नई को, लेकिन शायद यहाँ पे रिव्यू लिया जाए क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है. Absolutely. जैसे उन्होंने ऑलरेडी सिग्नल दे दिया वहाँ पे रिव्यू के लिए. And Jaipur Giants now the first one in this half, first one in this quarter. Setu sir here. That's what they're looking at. We'll try and bring you that on the big screen as well. Let's see how this review goes here. There it is, Mr. Parameshwaran. That's what they're looking at. There was constant passing. Joginder Singh Saharan with that constant movement there. There was a pass for Satyajit Chaprana. Went in for that basket. There the hit. And Mahipal went down. That's the place now. We're looking at a different angle. Remember, our head of the technical committee, Mr. Parameshwaran, will have a close look at what happened here. I'm getting that to you. Meanwhile, a chance for the Jaipur Giants to rejuvenate themselves, try and talk to their head coach. Discussion is currently on between the two. And here, at that very moment, let's see how it goes here. Here we go, the review that was being taken. Mahipal Singh. And at the leg also that we're watching. Let's look at it very slowly. Vijay is there at the back. Now the leg comes in. And there that leg has touched. The left leg has touched Mahipal's back leg here. So getting back to live action there. Waiting to see what the decision is. And there it is, the decision has been given, a review successful, they say, for a team Jaipur Giants.
absolute brilliance here in terms of the officiating, everyone. अभ्युदय, आपके क्या विचार है? क्या आपको लग रहा था कि ये एक फाउल है? क्या ये दिया जाना चाहिए था? नहीं, ये एक फाउल नहीं था मेरे हिसाब से. एक लूज बॉल पे दोनों लोग अपना हसल कर रहे थे, उसके लिए जा रहे थे, तो ये फाउल नहीं होता. एंड एक अच्छा रिव्यू लिया जयपुर ने और उनको बॉल वापस मिली. बास्केटबॉल में एक एक पोजीशन ज़रूरी होता है. आपको एक इस तरीके का रिव्यू का जो हम लोगों की तरफ से सिस्टम है वो बहुत फ़ायदा दे रहा है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि इस तरीके की कॉल्स पे भी हम लोगों को वापस बॉल मिल जा रही है. और एक अन्नादुरई का रिबाउंड, फास्ट ब्रेक के लिए बॉल दिया और एक बहुत अच्छा ट्राई था, अटैम्प्ट था, लेकिन मिस हुआ. जोगिंदर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, एंटोन को डिफेंस करते हुए प्ले को सेट कर रहे हैं जोगिंदर. हाई स्क्रीन एंड रोल के लिए बॉल आई और ये स्टील, एक बहुत अच्छी स्टील नवीन द्वारा. और डंक, नवीन मिश्रा फॉर यू. कल भी इन्होंने एक ऐसी 2 डंक शॉट्स मारे जो काफी मोमेंटम शिफ्टिंग थे इनकी टीम के लिए मुंबई के अगेंस्ट. एंड आज फिर से इन्होंने एक स्टील करके बहुत अच्छा डंक मारा है. लेट्स सी आगे अब क्या प्ले रहेगा जयपुर का. Naveen Mishra. Meanwhile, Jogi. There, a little fight. Getting to Anto. Leg there coming in the middle, and Joginder, very animated. Brings out the 2 hands there. Joginder. And Mr. Setu not very happy with what just happened. This is a part and parcel of the game, remember. It's going to get animated, it's going to get heated up. The tempo keeps rising time and again. And because this is the final, it's even going to be worse. Joginder there, in the heat of the moment, a shake of hand. And that's the spirit of the game. That's what we love to see in the game of basketball. It got heated up and now they're back to being friends. Played against each other. Just the heat of the moment brings out the worst in anyone and everyone. Meanwhile, at the left of your screens, you can see Mr. Setu having an argument there with the official. Not very happy with the decision that was given there. And the fact that they've not yet called the foul. Still waiting. I want this to be called a foul here. Not very sure what the decision is. 3 officials meeting there. In the game of basketball, remember, strength is a part and parcel of the game. Always strength involved. अभ्युदय, आप क्या बोलना चाहोगे स्ट्रेंथ के बारे में जो आपने अभी देखा है? जस्ट एंटो बेटली की जो लेग है, शायद से, हम ऑन पर्पस तो नहीं बोल सकते, बट शायद से उससे जोगी पाजी ट्रिप हुए हैं. तो मोमेंट्स लाइक दीज इन बास्केटबॉल वेरी कॉमन. या ये काफ़ी कॉमन है. डर्टी प्ले नहीं था मेरे हिसाब से. ये जोगी पाजी गए थे अपने लेअप के लिए एंड एंटोन को डिफेंस करते में उनसे टकरा गए. एक नॉर्मल प्ले है. हाँ, थोड़ा यह है कि इस तरीके के गेम्स में नर्व्स आपकी कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो आप इस तरीके के एक्शन कभी कभी ले लेते हैं, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ गेम. जो कोर्ट पे होता है वो कोर्ट पे ही रह जाना चाहिए. कोर्ट के बाहर सब साथ हैं. थोड़ा कंफ्यूजन चलता हुआ चेन्नई के प्लेयर्स थोड़ा रिव्यू का इशारा कर रहे थे एंड कुछ डिसीजन चेंज भी किया है ऑफिशियल्स ने. लेट्स सी के क्या होता है. और ये जोगिंदर के ऊपर टेक्निकल फाउल, इसकी वजह से अन्नादुरई को फ्री शॉट मिलता हुआ. क्या ये कन्वर्ट कर पाएंगे? 1 पॉइंट का और इजाफा चेन्नई के स्कोर में. स्कोर हो चुका है 43-27. इधर जोगिंदर को भी 2 फ्री शॉट मिलेंगे जो उनके ऊपर फाउल किया था एंटो ने, उसके लिए. लेट्स सी कि वो क्या करते हैं. क्या अपनी टीम के स्कोर को बढ़ा पाएंगे वो? ग्रेट डिसीजन भी मस्ट से अभ्युदय. अच्छी डिसीजन है कि दोनों टीम के प्लेयर्स को जिनके ऊपर फाउल हुआ है, दोनों को इक्वली पॉइंट्स दिए गए हैं या इक्वली अपॉर्चुनिटी दी गई है. ये एक सही बात है मेरे हिसाब से. बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जोगिंदर के एक्शंस थे उनको आप डिफाइन नहीं कर सकते नॉर्मली, तो उसके लिए उनको टेक्निकल फाउल मिला जो कि ठीक था. लेकिन उन्होंने अपने दोनों फ्री शॉट कन्वर्ट करके अपनी टीम के स्कोर को बढ़ाया है. अब देखते हैं आगे कैसे चलता है. एंटो प्ले को सेट करते हुए लोकेश के लिए बॉल. अन्नादुरई के पास पोस्ट बॉल में बहुत अच्छा पास दिया था, लेकिन बॉल बाहर जाती हुई कोर्ट से. जयपुर को बॉल वापस मिलती हुई. महिपाल और जोगिंदर बॉल को आगे लेके बढ़ते हुए. देखते हैं जयपुर की क्या रणनीति रहेगी गेम में आगे.
जोगिंदर सिंह सहारनपुर टॉप के ऊपर बिल्कुल, और ये महिपाल को पास। महिपाल ने लो पोस्ट पे बॉल डाली है सत्यजीत छपराना को। सत्यजीत छपराना बॉल लेके अंदर चलते हुए, और ये बहुत अच्छा आउटलेट पास दीपक चौधरी के लिए, बट ये दीपक का शॉट मिस हुआ। लेकिन एक फाउल कॉल किया है रेफरी ने, देखते हैं कि किसके ऊपर क्या फाउल दिया है। महिपाल के लिए ब्लॉकिंग का फाउल दिया गया है। And that's it then. You can see the men there, our CEO, Mr. Sunny Bhandarkar in grey. Alongside him, we have the CFO, Mr. Pranav Prabhu. And alongside him, the CMO, right at the far right, Mr. Kaustubh Ghare. And alongside with them on the left as well, we have Mr. Bharat Singh. We'll get you the visuals there once again. Jogi, meanwhile, right in the center. Moving along, another foul here that's been called. And there you go, a smile on their faces. Bharat there, the man in pink, always the head of operations. In the center, the CEO, Sunny Bhandarkar. To his right, Mr. Pranav Prabhu. And then on the far right, Kaustubh Ghare, the CMO. Meanwhile, back with the team Jaipur. Constant movement here. Joginder Singh Sahara and gets the point. There is the noise and the decibels will rise here this evening because there is quite some support for the Giants here. Chennai Turbos on the other side. Prakash Mishra, he's back. He looks fresh. Joginder is pumped. He wants to win the points. Constant movement. Mahipal. He's found Deepak. Given away there. Right at the back. Lokesh not very happy with the call. He said it's not a foul there, Lokesh. Prasanna doesn't look like she's going to take a review. Very least of the chances that she's going to opt for a review. And here you go, Deepak Chaudhary. Opportunity for him to get some points. Remember, Naveen Mishra has also been bought in. Stays in and Deepak Chaudhary delivers. A massive point here. One more opportunity here, 32-46. What's it for the Giants? It is another point. Straight away, substitution being signaled by the Turbos. And Lokesh walks out, Jayasurya will come in. Meanwhile, Vijay, straight away to Anto. Constant movement. They have to try and do their best here. Anto Betley straight to Naveen Mishra. Naveen with the 1-2. Looking for a personnel here. Anto. No screening there. Is he going to go in? Yes, he does. What a turn. Good spin. And a point here for Anto Betley. He's been in good form today. Fine touch. And really executing the play. Don't you think, Abudaya? एंटो एक काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और इनकी शूटिंग बहुत अच्छी है, और ये काफ़ी अच्छा प्ले बना के इन्होंने एक शॉट कन्वर्ट किया अपनी टीम के लिए। और कोर्ट की दूसरी साइड एक फाउल होता हुआ, जयपुर की टीम का फाउल कॉल हुआ है शायद, उसके लिए उनके कोच काफ़ी नाराज़ भी हो रहे हैं रेफरी के ऊपर। नहीं, जयपुर को ही बॉल वापस मिली है। जयपुर प्ले अपना सेट करेंगे। जयपुर के कोच बोल रहे थे कि ये फाउल उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिला भी है। तो महिपाल को 2 फ्री शॉट मिलते हुए उसी के लिए, और ये पहला कन्वर्ट। महिपाल काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा खेल के दे रहे हैं वो इस गेम में, और दोनों शॉट्स कन्वर्ट किए। लीड धीरे धीरे कवर होती हुई, हमें देखना होगा कि चेन्नई अब क्या करती है। एज पर मी, चेन्नई को अपने लो पोस्ट गेम के साथ स्टिक करना चाहिए, क्योंकि अरविंद अन्नादुरई इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर अंडर द रिंग, और वही किया उन्होंने। लेकिन विजय को यूज़ करते हुए विजय ने नीचे से बास्केट काउंट किया। 2 पॉइंट चेन्नई के लिए। स्कोर हो चुका है 50-35। 50-35. Constantly moving around. Mahipal, Joginder, back to Jogi now. Right in the center, going all by himself. Stolen by Vijay. They're on the counter. Anto Betley finds Jayasurati. Annadurai completes that move. And just like Abuyuda mentioned previously, very strong under the ring. That's one of his strong moments. And there you go, another point being converted here. 52-35. Prakash Mishra, the captain there of the Jaipur Giants.
leading the tide, leading the run here. They want to page a comeback. Certainly there is a chance in the game of basketball. Any quarter can turn the game on its head. Remember that. It also depends on how quick you pass, how you can get into the key, into the paint and unleash your maximum amount of power. 37-52. Watch Annadurai there being guarded by 3 men. All by himself. Comes out. Joginder doesn't waste any more time. Back with Mahipal. Mahipal's accelerating. Uses some force on Naveen. And Naveen being strong there. Naveen not very happy there. Mr. Prasanna says, let that go. And a possession there once again. 52-37. Anto Betley. Once again back to Vijay. Converted. One more point here. Chennai Turbos have charged everything they require today. Their players certainly are charged up. And the team spirit looks top-notch to try and win the finals. अभी तक जैसे ही मैच स्टार्ट हुई थी ऐसे लग रहा था कि एक वन साइडेड अफेयर हो सकता है. Could have been one sided, but with Jaipur trying to come back in this quarter, do you think they'll still make it back, or do you think it's going to be Chennai's game? अब तक तो ऐसा लग रहा है कि चेन्नई का गेम होगा, लेकिन जिस तरीके से जयपुर अब गेम में वापस आने की कोशिश कर रही है, गेम किसी भी साइड को शिफ्ट हो सकता है और इसके बाद भी बहुत ज़्यादा गेम बचा हुआ है. ये काफ़ी अच्छा शॉट जयसूर्या द्वारा. जयपुर ने अन्नादुरई को डिफेंस करने के लिए काफ़ी अच्छी टैक्टिक अपनाई है कि उनको वो 2 मैन लगा के रिंग से दूर रखना चाह रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि विजय अपने आप में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्होंने रिंग के नीचे से इसी टाइम पे 4 पॉइंट बहुत जल्दी सक्सेशन में चेन्नई टर्बोस के लिए मार के दिए. और 50 सेकंड बाकी है. Last 48-49 seconds there on the clock. And look at the head coach there, Mr. Setu. Like I spoke to him before when we began, he's always a character, always very animated, loves to speak to the boys with some intensity. Remember, on one side you have Mr. Setu, on the other side you have exactly a contrast in Mrs. Prasanna. When she talks to them, she's very calm, very composed, doesn't do a lot of talking, not very animated. But when the boys are on the court, there is that noise that you can hear. What do you think, Abu there? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो जयपुर के कोच हैं वो खुद भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे. कुछ टाइम पहले तक वो प्रोफेशनली भी खेले हैं. प्रसन्ना मैम भी एक बहुत एक्सपीरियंस कोच हैं. उनका लेकिन कोचिंग देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. हर कोच की अलग अप्रोच होती है गेम को लेके एंड उस चीज़ के हिसाब से उनकी टीम खेलती है. प्रसन्ना मैम ने अपनी टीम को फाइनल में लेके आए हैं. काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी टीम का गेम प्ले सेट किया है. उस वजह से उनकी टीम यहाँ पे पहुँची भी है. बहुत ही बढ़िया. जोगिंदर with this one, trying to maneuver the player once again. Remember, last 45 seconds, very important as to how you end this entire quarter. Back here, right in action, Satyajit. Constant movement. Give that play away. And remember, the way you end your quarter will give you the confidence, give the team the confidence. And specifically, we're talking about Jaipur Giants because they're trailing currently. And that will certainly help them. Joginder this time needs space for himself. Annadurai now. Straight to Jayasurya. He's been blocked by 2. And Miss Prasanna not very happy. Very animated here, the two teams. There's quite some power. 58-37. अब देख क्या लग रहा है कि कैसे एंड होगा ये, स्कोर लाइन क्या रहेगी. सिर्फ 20 सेकंड बाकी है. जयपुर को इस पोजीशन पे अपनी स्टील करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उन्हें एक पोजीशन और मिल सके अटैक के लिए. लेकिन चेन्नई के पास बॉल है. मेरे हिसाब से उनको अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करके एक बॉल कन्वर्ट करनी चाहिए यहाँ पे ताकि उनका स्कोर 60 हो सके. एंटो प्ले के लिए सेट करते हुए, और ये बहुत अच्छा प्ले. एक आउटलेट पास जयसूर्या के पास. जयसूर्या ने अरविंद को बॉल दी और अरविंद अन्नादुरई रिंग के पास से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हुए, लेकिन बॉल हुई मिस. और जोगिंदर के पास बॉल, उन्होंने हाफ कोर्ट से बॉल फेंकी और ये टाइम खत्म. हाफ पर स्कोर है 58-37. That's it then, the second quarter and the first half here comes to an end. 58-37. It's been a great evening so far. Yet another half an hour to go. And remember, live action will continue here on the EPB page at the same time.
I'd like to call in then Niti, who will take you to the proceedings for the next part of this game. Stay tuned as she brings in her analytic view along with the vision. And the score is great. It's coming as a great match, but this is such an elite basketball league. I'm sure you want to meet the faces behind this amazing league. So let's call in the men, the stars of the show. Absolutely, Tarasha, very well said. I'm sure you've been waiting to see them. They put in so much hard work into bringing this and pioneering a new basketball league in India. Let's not waste any more time. Let's call upon the EPBL team. Remember, leading the line, we have the CEO, Sunny Bhandarkar. Alongside him, we also have the COO right in the center, Mr. Pranav Prabhu. On his right, we have Mr. Kaustubh Gare, CMO. And towards the left, we have Mr. Bharat Singh, the COS of the team here. So very firstly, Sunny and team, it's very great to have you guys right here in the center. Remember, this entire pro basketball league has been your baby. You've been working on it from quite some time. Finally comes to an end today. Give us your views on that. I would say it's not the end. It's just a new beginning. We are already working on the season to start, and I'm so happy that all the players, all the coaches, everybody has supported us so much. The basketball fraternity has come together to put this together. It's a team effort.
It's not a one-man job. And I'm so happy that we have created a family here, a home here for the athletes, where they can come and feel safe and they can showcase their talents. So really happy about everything. Absolutely. There was a lot of talk, a lot of chatter with when the season will begin, the pre-season, main season. You've already finished the pre-season here. What's the roadmap ahead? The roadmap would be, of course, we are already working on the logistics of getting the season started. And it won't be a long wait, I can assure everybody. It's only a matter of time. Probably in a matter of months, you'll be seeing the season as well. And this is just an activity for the teams to gel together, for us to see how balanced the teams are, who has to work on what. And of course, we also as a team have learned a lot from the experiences. We'll of course just keep getting better from here. Absolutely. You guys have put on a very good show. This basketball league, the Pro Basketball League, how is this going to shape the future of Indian basketball? This is the platform where the people, where the athletes can showcase their talent. This is an inspiration to the emerging athletes. So I would just like to say that the level of play is going to go up, and the hidden gems in the country would not be hidden anymore. That's our main agenda. It's all about the athletes. It's all about getting our country to a better level where they are right now. And I'm already seeing so many players get better day by day. And I'm sure this will keep on happening. Absolutely. Like you mentioned, the hidden gems will no more be hidden in the country. An opportunity to upscale the players and promote them to play the best basketball. Thank you so much, Sunny and team, for being with us here today and for speaking with us. We'll see you very soon. Sunny, the CEO, had some amazing things to tell you, but wait for the little surprise that's coming your way. Let's call in the future of basketball, the kids from the Dribble Academy and the Right to Play Academy. As they enter, friends, let's have a round of applause for the future of the Indian basketball circuit. All right, then, as you can already see, we have so many of them lined up here, and they specifically come in. We're going to do a short competition with them. Let's have 2 reps from each side, 2 from the black team, 2 from the yellow. We'll just do a shooting competition on that side. Questions and why they like basketball. Come on this side, come on this side.
Can you tell me your name? Yash. Yash, what's your name? Shahir. Sahil. आपका क्या रिश्ता है बास्केटबॉल से बताओ हमें. Why do you like the game so much? Because I love this game. I like basketball. I am basketball. And what do you have to say about the league? This is the first time you're seeing a pro basketball league. कैसा लग रहा है vibe आके? बहुत अच्छा लग रहा है. Amazing. Ready to compete? Ready to compete? Yes. Okay. Tell. आप बताओ अपने बारे में क्या नाम है? क्या What's your age? कब से खेल रहे हो? मैम उज्जवल नाम है. 2 साल से बास्केटबॉल खेल रहा हूँ. और यहाँ आके कैसा लग रहा है? वाइब कैसी है? पहली बार आ रहे हो इसी जगह पे? कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. आप फ्यूचर में अपने आप को यहाँ खेलते हुए देखते हो? यस मैम देखना चाहता. आप बताओ हाउ यू कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. रेडी हो हमें अपने ड्रिल्स दिखाने के लिए? Yes मैम. Okay, let's go. All right, then remember what we're going to do is what we did yesterday. We're going to allow them to take some throws and the best of 2. Okay, the best of 2 wins. आपको 2 chances मिलेंगे. 2 chances में से जिसने भी ज़्यादा chances convert किए उसको हम एक merchandise देंगे. ठीक है? Ready? Free throw. ठीक है? Ready? Okay, let's try a 2 pointer. आप वहाँ से try करना जैसे. ठीक है? All right, friends, let's hear a round of applause for them. Come on. All right, let's have the next 2. Wow, lovely, massive. Almost there, very nice. Okay, we've got a tie among the boys. Let's keep the 2 of them who were tied on 1 each. We'll keep you on this side. Let's have the 2 girls come in as well. Come on. Same process. So you get 2. There it is then. They'll try another attempt. Remember, they get 2 chances each. Excellent. All right, very nice. Let's have a round of applause for them as well. We have 2 from Team Black here. Remember, they represent Team Right to Play and Dribble Academy. The kids in yellow representing Team Right to Play and the kids in black representing Dribble Academy. Marvelous. Nicely done. Big round of applause for all the kids, everyone. Come on, make some noise. The future of Indian basketball. We have a winner among the girls, but we have a tie among the boys. Let's have the 2 who are tied. All right, here we go. Tiebreaker. Lovely. Gets the first one converted. Come on, audience. Let's all clap for them. Come on. Lovely. Good attempt. Oh, beautiful. Once again, we have another tie for both the boys. Come on, let's go. 2 more for each of you. Oh, 1 in.
All right, we'll have some alteration in the rules here. One change, only one attempt, yeah? Only one attempt, golden shot. Come on. There it is. We have a winner here. And before we head for the prizes that we have to give you, I've also got to know that the right to play, the students have a little bit of questions for the Chennai players. Can we have the students come in here? Sahana, mic is all yours. You can go to the Sara. Okay, Sara, the mic is all yours. You can get to the Chennai players. They're all there on that side, and we love to see what questions you have for them. Hello. I would like to ask you, what advice would you give us for basketball? What? What advice would you give us related to basketball? Nowadays, a lot of leagues are they are starting the leagues. Just work for your basic fundamentals. Basics. For basics, if you learn basics, in future you can play well. Yeah. And who was your inspiration for basketball? LeBron James. Huh? LeBron James. NBA player. Thank you. Thank you for calling us. Let's have Yash come next. Yash has a question for one of the players. Okay, he has a specific favorite here, Jay Surya. Hello. Yeah. Who is your favorite player? My favorite player, Kobe Bryant. Huh? Kobe Bryant. Oh. I would like to ask to Arvind. Ask him, I'm not the player. Have you ever met an NBA player? What? Have you ever met an NBA player? NBA. No. How can I be as strong like you? Not me, like Arvindana, 18. Okay. Yeah. Arvind, there is a question for you here. A little one has a small question. He's asking, how can he be strong like you? Now you are children, just baby, no. You have to grow first. Then you have to do a lot of weight training, lot of exercise you have to do. Now you have to eat well, drink a lot of water, sleep well, study well. That's all. And the winner of the contest, I request Yash, and I request the CEO, Mr. Sunny, to please give him a merchandise as a token of prize, please. Nikhil. We have one more. Nikhil. Thank you, Sunny. Thank you, Nikhil. Without delaying any further, let's get into the second half of the final match. See you at the live action. Over to comment box. Check this, all of you, remember, for all the fans seated inside this stadium, the players are coming on board, but we have a performance by Karma right after this. So all the Karma fans, can you give me a cheer? All right, we're going to hear you in a matter of some time. Stay tuned.
एक्चुअली सब दिन ठंडे नहीं आप स्टार्ट करिए। कमिंग बैक टू द एक्शन और सेकेंड हाफ के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि ये है अल्टीमेट बैटल जहां पर चेन्नई टर्बोस इस समय जयपुर जायंट्स के खिलाफ हैं। 58-37 यानी पहले क्वार्टर की जब समाप्ति हुई थी तो 25 पॉइंट्स का डिफरेंस था और सेकेंड क्वार्टर की समाप्ति पर 21 पॉइंट्स का डिफरेंस। तो आखिरी मुकाबला है, ये आखिरी दिन है और फाइनल बैटल इस समय चेन्नई वर्सेस जयपुर, मेन इन येलो वर्सेस मेन इन पिंक। वहां पर अटैक बनाने की कोशिश इस समय अरविंद जो है पेंट के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस और आखिरकार उन्होंने वहां पर इनवाइट किया है अपने ओपोनेंट को फाउल करने के लिए। तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है इस सेकेंड हाफ की चेन्नई टर्बोस के लिए। और आते ही अरविंद का फ्री थ्रो लाइन पर आना, चैरिटी स्ट्राइक पर खड़ा होना, ये बताता है कि वो कुछ ऐसी ही शुरुआत चाहेंगे टर्बोस के लिए। और हमेशा की तरह हम इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि अरविंद का जो फ्री थ्रो लाइन पर जो कन्वर्जन रेशियो है वो इतना एफिशिएंट नहीं रहा है। तो क्या वो दूसरा फ्री थ्रो कन्वर्ट कर पाएंगे? यस, इट इज अ फ्री थ्रो। एक और पॉइंट उन्होंने अपनी किटी में ऐड किया है। जोगिंदर बॉल के साथ, जयपुर जायंट से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, मुकाबले में वापसी करनी ही होगी क्योंकि ये तीसरा क्वार्टर है। माइनस पर इस समय दीपक चौधरी अंदर आने की कोशिश, ड्राइविंग क्या है, वापस पास निकाला है प्रकाश मिश्रा के लिए। पेंट में आए तो है लेकिन काफी ट्रैफिक है पेंट में। और अब महिपाल का ये 3 पॉइंटर, नथिंग बस नेट। एक बढ़िया स्विश वहां पर महिपाल का नंबर 5। लगातार हमने जिक्र किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो जयपुर जायंट्स को अभी इसी वक्त यूटिलाइज करना होगा क्योंकि चेन्नई टर्बोस जो है लगातार अंकों में इजाफा करते हुए समय। Right, good offensive rebound there, and Jaipur will need to box out a lot more. A couple of basic things a little out of place for this Jaipur side on the offense. They need to create more opportunities and the shooting needs to be better. Good move to the net. And that's what you need. You need a little bit of luck. Good hustle on the defense. Mahipal realizing that Arvind was in a dangerous position. Just getting a flick in the nick of time. Interesting to observe both these sides. In fact, the first quarter was a runaway freight train with the name Chennai Turbos on it. 36-11 that first quarter. The second quarter, interestingly, Jaipur outscored the Chennai Turbos. They scored 26 points, whereas Chennai Turbos scored only 22. And here, back-to-back threes for the team from Jaipur. Are they mounting a comeback? 43-59, 16-point lead, Neeti, and immediately you can see the tempo change by Chennai, kind of slowing down play, wanting to stay in control of this contest. बिल्कुल वहां पर उन्होंने पेस डाउन किया है क्योंकि वो जानते हैं कि ओपोनेंट लगातार एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की नजर में है और उनकी कोशिश ये है कि उन्होंने जो बैक टू बैक 3 पॉइंट का अटेम्प्ट किया है, लॉन्ग रेंज शूटिंग दिखाई है, ये साफ दिखाता है कि उनके इरादे क्या हैं फिलहाल चेन्नई टर्बोस के खिलाफ। इसी क्वार्टर में वापसी करनी होगी, इस तीसरे क्वार्टर में ऑल आउट जाने की जरूरत है जयपुर जायंट्स को। अरविंद फिर से एक बार फ्री थ्रो लाइन पर, टीम के कैप्टन है नंबर 1 calling the play, asking for that screen. Mahipal. Bhagyan sets up that screen. Will this go in? If it did, it would create some pressure on the Turbos. At the other end on transition, Turbos giving Anto a break. Beautiful looping pass there, just beyond the press that was being set up by the Giants. Looping the ball just above them. Here comes Joginder. Prakash needs to be in a better position to receive the ball. Receiving the ball a little too far outside the 3-point arc. This time he's in the right place. He needs to be in a shooting range when he receives the ball. Jasurya now. Outlet pass for Anto. Tamil with the ball in. Good hustle in defense. Anto, shot clock at 9. And foul. A couple of players are too crucial, Neeti, for the Jaipur Giants. Joginder cannot afford to get into foul trouble. Prakash cannot afford to get into foul trouble. Maybe we can add Mahipal also to that list. These three, if any one of them gets into foul trouble,
it's going to be very hard for Jaipur Giants to come back. बिल्कुल विजन वहां पे इन तीनों को यानी these three have to be free from the fouls. इनको अपने आप को बचाए रखना पड़ेगा, संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तीसरे क्वार्टर का खेल है और तीनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है टीम को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाने के लिए. जोगिंदर, प्रकाश मिश्रा, महिपाल, ये तीन खिलाड़ियों को अभी और दमखम दिखाना बाकी है और शुरुआत तो कर दी है जयपुर जायंट्स ने इस तीसरे क्वार्टर के दौरान. जोगिंदर, ये बाउंस पास इस समय भाग्यांश के लिए, ये लॉन्ग पास, लेकिन अभी भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश लगातार जयपुर जायंट्स की. तमिल सेल्वन थोड़ा सा बॉल हॉक करने की कोशिश इस समय करती नजर आ रही चेन्नई टर्बोस, क्योंकि नहीं चाहेंगे कि पोजेशन गंवाएं. अरविंद पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लॉक, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंस है. अरविंद को चलने नहीं देंगे जयपुर जायंट्स ने, ये तय किया है तीसरे क्वार्टर में. उन्हें रोक लीजिए, उन्हें ब्लॉक कर दीजिए तो थोड़ा सा सफ़र आसान हो जाएगा. एक पुल अप जंपर लगाने की कोशिश, मौका फिर से महिपाल के लिए और आखिरकार सफलता मिल गई है. और इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. बैक टू बैक अगर आप अटेम्प्ट करते रहेंगे, बॉल बचाए रहेंगे तो आपको स्कोर करने का मौका ज़रूर मिलेगा. और महिपाल ये बखूबी जानते हैं. अपना ऑफेंसिव रिबाउंड कलेक्ट किया, उसके बाद 2 पॉइंट का कन्वर्जन. अरविंद वहाँ पे एंटो बेतले, अरविंद के सामने भाग्यांश, अंदर आने की कोशिश, थोड़ा सा डिफेंस को पुश करना चाहते थे लेकिन जयसूर्या फ्लिक तो किया लेकिन क्लिक नहीं हुआ है. अभी थोड़ा सा और 3 पॉइंट लाइन से क्लिक होना बाकी है, लेकिन विजय आखिरकार सफल हो ही गए. वहां पे चोट लगी है और फिलहाल बॉल इस समय जयपुर जायंट्स के पास है. टीम का एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी जब कल मुंबई स्टार्स में चोटिल हुआ था, मानिक ओहलान के चोटिल होने की वजह से मुंबई स्टार्स को कल बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा. उन्हें टॉप 4 की जो फाइट थी चेन्नई टर्बोस के खिलाफ, वहां से हार का सामना करना पड़ा. विजय की चोट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे चेन्नई, क्योंकि ये तीसरे क्वार्टर में जयपुर जायंट्स ने जो है बैक टू बैक स्कोर किया है और वापसी का ऐलान किया है. Absolutely, if you look at this third quarter, Jaipur has outscored the Chennai Turbos. So it's going to be interesting. They're going to lose one of the two pillars that they have. Their offense is built around the two heights, Arvind and Vijay. And if Vijay is going to be out of play, they're going to be relying a lot more on Arvind. And Jaipur has done a fairly decent job in terms of defending Arvind, especially in that second quarter, keeping him out of play. If you look at the top scorers of both these sides, both the top scorers have done a pretty equal job. At the end of the first half, both Arvind and Joginder, Arvind for Chennai Turbos had scored 20 points and Joginder for the Jaipur Giants had scored 20 points. So the top two performers are performing well for both these sides. It's the second and third line that's not really worked very well for the Jaipur Giants. Pull-up jumper for Joginder. Not getting the roll from the ring. An opportunity to reset. This time, Prakash not really lucky. And good defense by Arvind. These kind of turnovers are crucial for the Jaipur Giants. And Manipal understanding that. Manipal saying that, I need that call from you, ref. And that's the banter that happens on the court. Sometimes the players get a little too tensed up with the officials. Sometimes a smile really works. And Manipal using all his experience and going for the latter. Here's the Jayasuriya pull-up jumper from 0. Can he nail it? Well, even if he can't, there's Arvind for the rebound. Good hustle there by both these sides. 100% committed. Joginder now with the ball. Takes it past Anto. Prakash. He has someone free at 0. Deciding to go for the more productive option. Mahipal. Looking for some help. Nice within range. This can go in. Nice defense, Joginder now. 11 seconds on the shot clock once again. This time it's short. And the outside productivity, the field goal percentages really need to be high for Jaipur if they need to make a comeback. Still, Chennai Turbos enjoying the cushion that they created for themselves in that first quarter. What an amazing quarter it was. 36 points. And Anto reminding us of that first quarter. A 3-pointer from 45.
Pull-up jumper on the other side. This time it's an air ball. Let's take a look at that again. Anto given enough space. Joginder a little late to put up his hands and making it count at the other end. Anto with the ball. The man in form. Switching there off the screen. And this time, since Arvind is not there for the rebound comes to Jaipur Giants. Bounce pass there. Can he get a foul? He needs to attack the board a lot more. You need to go in with a lot more aggression against Arvind, otherwise it's not going to work. Here comes Arvind, showing you how it's done. Good defense. Very much still in the game. Good ball rotation. They need to convert here. Can they make it work? Yes, they can. What a sensational drive in by this man. Mahipal drives in. Beautiful lane there off the glass. Just about getting the roll from the ring. 49-68. Still hanging on to this contest. Still believing that they have a chance. Still thinking that they can pull it off. And it's belief that's going to carry them, especially in moments like this. You can see Setu, the coach, telling his players, it's more about belief when you're down with such a big lead. You need to believe that you can come back in. There are strategies, there are tactics that you need to put in play. But more than anything else, it's the belief that you require. Chennai, on the other hand, it's an opportunity to rest. They have a position, they have a cushion that they are enjoying right now. And Prasanna there must be telling her players, use your experience, use your grit, use your determination and stay in the play. तो जो 18 और 19 का जो डिफरेंस लगातार बना हुआ है, वो जो मार्क है वो ब्रेक करना होगा जयपुर जायंट्स को. और पिछले इस क्वार्टर के दौरान जितना भी एक्शन आपने देखा है, अभी 2 मिनट और 54 सेकंड बाकी हैं. जयपुर जायंट्स वापस तो आए हैं. थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी समय दिखानी होगी. अपने इस डिफरेंस को इसी क्वार्टर में जल्द से जल्द कवर अप करना होगा, क्योंकि फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास 11 मिनट बचेंगे. चेन्नई टर्बोस को के नज़दीक जाना होगा. ये एक टर्नओवर और इस समय तेजी से मौका बन चुका है जयपुर जायंट्स के लिए. जोगिंदर, प्रकाश मिश्रा, एक बढ़िया रोटेशन और यहाँ पर सत्यजीत के ऊपर जो है फाउल किया है. तो आखिरकार सत्यजीत को मौका मिलेगा फ्री थ्रो लाइन पर आने का. नंबर 14 एक बढ़िया बॉल रोटेशन जो है देखने को मिला था. इस वहां पे फ्री थ्रो, क्षमा कीजिए, वहां पे कोई फाउल कॉल नहीं, वहां पे सिर्फ वायलेशन के लिए इनबाउंड का मौका था जयपुर जायंट्स के लिए, लेकिन वो मौका भी उन्होंने गवा दिया है. और एंटो बेथले, यहां पे फाउल विसल कॉल हुआ है प्रकाश मिश्रा के ऊपर. प्रकाश मिश्रा अपनी टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी. आज प्रकाश मिश्रा को चलने नहीं दिया है बिल्कुल भी चेन्नई टर्बोस ने. वो बखूबी जानते हैं कि किस प्लेयर को किस समय पे मार्क करके रखना है, किसको आइसोलेट करना है, किसको सफोकेट करना है. और आज उन्होंने प्रकाश मिश्रा को उनके कलर्स में आने का मौका ही नहीं दिया है. प्रकाश मिश्रा जो पिछले कुछ मुकाबलों में अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा स्कोर करने में कामयाब रहे हैं. जयपुर जायंट्स इस समय पिछड़ते हुए और एंटो बेटले, इनके कंपोजर, इनके काम की उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि चैरिटी स्ट्राइक पर आप कितने पेशेंस के साथ अपने फ्री थ्रोज मिस ना कीजिए. सत्यजीत का ये 2 पॉइंट. तो कुछ इस एक्शंस के, कुछ इन्हीं एक्शंस की सख्त जरूरत है इस समय जयपुर जायंट्स को. एंटो बेटले स्क्रीन की मांग कर रहे हैं अरविंद से. बॉल रोटेशन की कोशिश, अंदर आए हैं इस समय लोकेश और ये कोई कन्वर्जन नहीं है. प्रकाश, रिबाउंड कलेक्शन उसका काफ़ी अच्छा है, चाहे वो ऑफेंसिव हो या डिफेंसिव, लेकिन फिलहाल आज उनका कन्वर्जन रेशियो चल नहीं पाया है चेन्नई टर्बोस के खिलाफ. तो इस समय पोजेशन है चेन्नई टर्बोस के पास. और चेन्नई टर्बोस जो अपने सेमीफाइनल्स में मुंबई स्टार्स को हराकर इस फाइनल मुकाबले में नजर आ रहे हैं.
अरविंद, बॉल स्टील की कोशिश तो हुई है और आखिरकार वहां पे लेकिन विसल, एक अच्छी कोशिश हुई थी वहां पे, बढ़िया इंटरसेप्शन के लिए ट्राई तो किया था जयपुर जायंट्स ने। As always, Arvind struggling with his free throw conversion percentages. But whatever he misses from the free throw line, he brings so much more to this Chennai Turbo side in terms of his presence within the paint. His defensive presence makes such a huge difference for the side. And a 50% conversion rate of the free throw line is something that you can live with when you have such a star playing for you. Tough defense by Chennai. All the way into the paint and foul there. And immediately responding to that call, the manager from the Chennai side asking for a review. There was a foul called and they believe that there was no infringement. It's also an opportunity for both these teams to get a breather. It's been a brisk pace in this match so far. And of course, off the blocks to a blistering start were the Chennai Turbos, running away to a 36-11 lead in that first quarter. Then in the second quarter, Jaipur Giants slowly began to pull things back. In fact, in the start of that quarter, they were dominating the scoring. The second quarter rather, ending 58-37 in favor of Chennai Turbos. But this side on your screen, the Jaipur Giants outscored Chennai Turbos in that second quarter. Jaipur Giants scored 26 points in Q2, whereas Chennai Turbos scored only 22. So it is possible they can outscore their opponents, and it's that belief that they will be looking to carry into this third quarter. If you look at this third quarter, 12 points, that's what Chennai have scored in this third quarter so far. And Jaipur scoring 14. So once again, in this third quarter as well, Jaipur Giants have in fact scored more than the Chennai Turbos. Remains to be seen whether they can bridge that gap. That first quarter was such a big, massive dent. Let's take a look at that look again. And I don't know why Arvind went in for that call. It was so obvious that it's a foul. And that's the determination and dedication and the passion that he has. And sometimes players just don't realize, Neeti, that they've committed a foul. Right? And that's what it seems like here. He was so confident, turned around right away to Prasanna, who's their manager, and said, let's take a review. And she believed her captain, which is what you want to see from a coach as well. So it's good on both sides. But review lost, and that's the innovation that we've seen in the Elite Pro Basketball League this year, 2023, the inaugural preseason, and there are two major changes that have come into the play. One is this review system, and here we see a good example of how players can use it, coaches can use it. And also we have the trump card, and now that is something that the fourth quarter will bring to play. Missing the first. $19-point cushion still there for the Turbos, and they will be hoping they'll get a lot more out of their offense. The beauty of this Chennai side is not so much as offense, it's more of its defense. They are such a good side when it comes to defense. They've not really allowed any team in this whole tournament to score heavily against them. And offering for a push, an offensive foul there. Bhagyansh pleading to the official, saying it's not a blocking violation, it's actually a charge.
Even gesticulating to the official that he's using his elbow to push me away. Nothing doing. Free throws, 2 of them for Arvind. Usually he converts 1. This time he converts the first. So it's one of those attempts where he might push up his free throw percentage. Taking his team's tally to 71. Can he make the lead an even 20? Yes, he can. So with 1 minute to go in the third quarter, it's a 20-point lead for the Chennai Turbos. Joginder, beautiful pass there inside the lane, and Bhagyansh spinning in the paint off the glass for 2. Jaipur Giants will do well to post up more and more against Arvind, get him into some kind of foul trouble. All that experience, Neeti, what amazing experience. Realized that he had left the ground and then putting the ball off the offense. Brilliant. Let's see if we can work out a highlight there for you. Thank you, team. The production team responding to our call. Beautiful pass there by Joginder. Off the glass for 2. Foul called against the men in pink. And change for the Jaipur Giants. Changing the 2 pivots. Bhagyansh stepping out. And Satyajit comes back into play. Satyajit a little lighter than Bhagyansh. And taking on Arvind, the number 18, the captain of the Chennai Turbo side, is going to be difficult with a lighter frame. So they needed the weight that Bhagyansh brings. But foul trouble, that's impacting decisions. What a critical rebound. Joginder with the ball now. Very smart defense there, Neeti. Realizing that Joginder likes a right hand, he's in advance blocking that right hand dribble. Brilliant by Jayasurya. At the other end, trying to play a transition. This time not working out. (73-54) क्वार्टर 3 और सिर्फ 2 सेकंड. यहाँ पर स्ट्रेस टेंशन जो है अब जयपुर जायंट्स के डगआउट में नजर आने लगा है और इसी के साथ इस तीसरे क्वार्टर की समाप्ति हो गई है. 73-54 का स्कोर. विजन, जिस तरह से क्वार्टर नंबर 3 में शुरुआत की थी जयपुर जायंट्स ने, हमने जिक्र किया था कि उस कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, उसे सस्टेन करने की ज़रूरत है. लेकिन जब मिडल फेज था क्वार्टर नंबर 3 का, तो वो जो कंट्रोल है उन्होंने वो गवा दिया और चेन्नई टर्बोस को आगे निकलने का मौका दिया है. ऐसा नहीं है कि उनके पास मौके नहीं आए, मौके आए लेकिन मौके भुना नहीं पाए, जो जयपुर जायंट्स के लिए काम नहीं किया है. और फिलहाल इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग के प्री सीजन में, इस 2023 के प्री सीजन में आज आखिरी दिन है. ये आखिरी मुकाबला है जयपुर जायंट्स वर्सेस चेन्नई टर्बोस. चेन्नई के पास अब एक अच्छा खासा एडवांटेज है. 73 पर है चेन्नई टर्बोस. जयपुर जायंट्स इस समय 54 पॉइंट्स पे. तो क्वार्टर नंबर 4 में शुरुआत से ही वही करना होगा जो उन्होंने क्वार्टर 3 की शुरुआत में किया था. लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस पूरे क्वार्टर में उस शुरुआत को बनाए रखना होगा, उसे बरकरार रखना होगा. जो गलतियां दूसरे तीसरे क्वार्टर में हो गई हैं, वो गलतियां अब जो है अगर हुई तो मुकाबला उनके हाथ से छिन जाएगा. तो अभी भी मुकाबला बना हुआ है क्योंकि 11 मिनट का समय है और अगर वो चाहें तो जो काम चेन्नई टर्बोस ने क्वार्टर नंबर 1 में किया है तो जयपुर जायंट्स अंतिम क्वार्टर में बिल्कुल कर सकते हैं. एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन का हमने जिक्र किया. जोगिंदर वहाँ हैं, प्रकाश मिश्रा वहाँ हैं, महिपाल वहाँ हैं, सत्यजीत बकेट के नीचे वो इतने स्ट्रॉन्ग वहाँ पर हैं. तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसे अब चलना ही होगा. They have to perform against Chennai Turbos in this last and the final quarter. Absolutely. This Jaipur side, in fact, has won quarter 2, quarter 3, and in quarter 4 they will want to continue that rhythm, but more importantly they will want to outscore this Chennai side by
18 more points. And that's the difference. That's the challenge. The gap between those two sides so huge. It's because of that amazing first quarter that they pulled off. And to take things forward, for all the excitement in quarter 4, and possibly to write a script that we can only dream about for the Jaipur Giants, it's going to be Stalin. Thank you so much, Vijay. It's been an exciting journey as of now. Fantastic game of basketball here that we've got to see. Remember, two teams are playing in so well. And we'll take off right from where Niti and Vijay left. Straight away points here for Team Chennai Turbos. Exciting encounter, let me tell you. Top-notch basketball. And this is what happened. A no-look bounce pass. Tamil Selvan. What a conversion. And joining me in the commentary box then for this last quarter is Abudaya Yadav. स्टेलिन, आपको क्या लगता है कि अब गेम किस साइड पे जाएगा, क्योंकि आखिरी क्वार्टर आ चुका है, सिर्फ 10 मिनट 30 सेकंड का गेम बचा हुआ है और एक चेन्नई के पास अच्छी लीड है 21 पॉइंट की. लग तो ऐसा रहा है अभ्युदय की जो मेन इन येलो है चेन्नई टर्बोस, आई फील दे गोना टेक दिस मैच अवे. 75-54 चांस तो है बिल्कुल. जयपुर दे आर शोइंग देयर अग्रेशन, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कम बैक, पर वो क्लिक नहीं हो पा रही है इस स्पेसिफिक मूव के साथ, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के साथ. और इसी के साथ जहाँ पे हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूशन हमें देखने मिल रहा है. दीपक चौधरी, ही इज बीन सेंट आउट एंड परमजीत राठी, he comes in there for the Jaipur Giants. So lots of excitement will keep building as we go through this last and final quarter. Remember, it's a final match and everything on the line. Trump card अभी भी आना बाकी है. अभ्युदय, आपको क्या लग रहा है दोनों टीम्स में से कौन-कौन से प्लेयर के ऊपर ट्रम्प लगी जाएगी? मेरे को लगता है चेन्नई तो अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए अरविंद अन्नादुरई को ही ट्रम्प कार्ड बनाएंगे अपना. जयपुर को देखना होगा कि किस प्लेयर की शूटिंग पे उनको ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि जयपुर के पास महिपाल, जोगिंदर और प्रकाश मिश्रा में 3 काफ़ी अच्छे शूटर्स हैं और उनको डिसाइड करना होगा कोच को कि वो किसको ट्रम्प बना के अपनी स्कोरिंग में इजाफा करना चाहेंगे. अरविंद अन्नादुरई के पास बॉल, उन्होंने बाहर पास दिया लेकिन रेफरी ने एक फाउल कॉल किया है. फाउल किया है जयपुर के अगेंस्ट. चेन्नई को बाहर से बॉल मिलेगी दोबारा. एंड टू एंड लाइन थ्रो लेते हुए चेन्नई अपना गेम प्ले सेट करते हुए. लोकेश के पास बॉल और ये एक और फाउल जोगिंदर के ऊपर. जयपुर को अपने फाउल्स बचाने होंगे क्योंकि वो जल्दी फाउल ट्रबल में नहीं आना चाहेंगे इस क्वार्टर के लिए, क्योंकि क्वार्टर के 4 फाउल हो गए तो उसके बाद हर फाउल के लिए फ्री शॉट मिलेगा चेन्नई की टीम को. एंड टू प्ले सेट करते हुए अपनी टीम के लिए और एक 3 पॉइंट शॉट मिस हुआ, लेकिन लोकेश ने काफी अच्छा ऑफेंसिव रिबाउंड लिया है. दोबारा एंटो के पास बॉल, परमजीत राठी उनको डिफेंस करते हुए. लोकेश के पास बॉल, जोगिंदर उनको डिफेंस कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा क्रॉसओवर देते हुए अंदर गए और ये मिस हुआ शॉट. जयपुर ने रिबाउंड लिया. महिपाल बॉल को आगे बढ़ाते हुए. प्रकाश मिश्रा के पास है बॉल. प्रकाश मिश्रा भी बहुत इंटेंसिटी से गेम खेलते हैं और ये काफी अच्छा शॉट मारा उन्होंने जो मिस हुआ, लेकिन अरविंद ने एक अच्छा रिबाउंड लिया. Absolutely, Abhyuda. Joe Anto Bethley है, the kind of player that he is. Remember, he is really coming into his groove today. And there you see Annadurai just signaling to the official कि what is happening, what is the kind of screening, what is the kind of guard that you were looking at. That is Annadurai for you. If you go at him in that manner, he is certainly going to convert and convert with brilliance. Let me tell you, friends. 54-78, Joginder Singh Saharan. Oh, lovely. Take a bow, my friend, Joginder Singh. He's a legend here that's stuck in the side for the Jaipur Giants. And remember, it only keeps getting better. The bigger picture that we're looking at today, the finals currently in progress. Back with Team Chennai, Lokesh with that 1-2 layup and another point. The audience certainly enjoying this moment. Mahipal Singh back now with Joginder. Constant taps. Mahipal Singh once again dribbling all over. Herbert is there, a complete turnaround. Joginder just with that 1-2, trying to get that through.
Another eye. Are we going to see a dunk? Almost got there, but he said not going to do it here today. And there it is. Chennai now making this look like a walk in the park. 82-57. क्या लग रहा है अबुदया? क्या वो वापसी कर सकते हैं जयपुर जायंट्स? मेरे हिसाब से जयपुर को इस टाइम पे अपना ट्रम्प कार्ड प्ले कर लेना चाहिए क्योंकि लीड बहुत ज़्यादा हो गई है. 25 पॉइंट्स की लीड, सिर्फ 7 मिनट्स बचे हुए हैं. तो जयपुर को इसी टाइम पे अपना गेम प्ले सेट करना होगा और उन्हें आगे का देखना होगा कि किस तरीके से वो इस लीड को कवर कर सकते हैं, क्या उनका गेम प्लान रहेगा. चेन्नई के लिए बस अपने डिफेंस को अच्छा रखना होगा ताकि वो ओपन शॉट्स ना दें जयपुर के किसी की भी प्लेयर को. और बाकी तो आप देख ही रहे हो कि कैसे अरविंद अन्नादुरई डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जयपुर के डिफेंस को. वो जो रेफरी को इशारा दिखा रहे हैं वो इसलिए कि जयपुर अपना हर तरीके से ट्राई कर रही है कि किसी तरीके से उनको डिस्टर्ब कर सके, उनको बॉल लेने से रोक सके, लेकिन कोई भी चीज़ काम पर नहीं आ रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जयपुर की टीम के लिए. Absolutely. Or another thing to note here is, remember Chennai, they're still in the lead, but look at the head coaches constantly talking to the players, constantly discussing few strategies, constantly executing the plans that they have in their minds. So which is a very good sign. Chennai not taking the back seat at all, always on the front line and always making sure that this goes in the right manner. ऐसा इसलिए है क्योंकि कोचेस ये चीज़ जानते हैं कि बास्केटबॉल में इतनी लीड्स भी कवर होती हैं. हमेशा नहीं होती हैं, ये चीज़ सच है, लेकिन 25 पॉइंट की लीड आखिरी 8 मिनट में कई बार कवर हुई है और कोचेस इतने एक्सपीरियंस हैं कि इस तरीके के सीनियर प्लेयर्स से ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये काम करके दिखाएं आगे भी. Lovely point here. Jaipur Giants, Joginder Singh once again. Anto. With that tap all around. There is that pass there. Tamil Selvan, this time for the Chennai Turbos. They're having a ball of a time here. Everyone now making sure they contribute in the final match. Back those 2 points, back those 3 points, walk over the Giants and let them know that they're not Giants anymore. That's the objective here from the Turbos. Another assist straight away to Mishra. And there he goes. Difficult to get that point. Tamil Selvan comes and steals that. What is happening here? Not able to convert. I guess it's the confidence that we're talking about, Abudaya. It's the pressure. जयपुर अब प्रेशर में आती हुई उनको ये चीज़ दिख रही है कि टाइम कम बचा है और उनको जल्दी जल्दी कवर करना है. और प्रेशर आपके ऊपर कभी भी हावी हो सकता है बास्केटबॉल के गेम में. आप ओपन शॉट्स भी मिस करते हो इस टाइम पर और वही चीज़ हम जयपुर को करते हुए देख रहे हैं कि वो अपने ओपन शॉट्स भी मिस कर रहे हैं. और ये एंटो ने एक और 3 पॉइंटर. आज बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं एंटो, अपनी टीम को लीड कर रहे हैं अरविंद के साथ. एकदम परफेक्ट शॉट, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने शॉट लिया और वो कन्वर्ट हुआ. इसी के साथ स्कोर हो चुका है 88-59. Absolutely. एंटो के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मम्मी बीमार है, but still, irrespective of that, he's not taken the pressure today. He has to leave very quickly. And he's playing brilliantly, putting his best body on the line, giving his 100%, and he's been the key player today. So remember, that's very important for how the player plays in his psyche. You know, sometimes it's very difficult to consider what's happening back home, how the situation is. But he's putting up a very good display in terms of basketball, the kind of basketball he's bringing to the court. And that's why we're talking about the Pro League here. Friends, this is what happens. This is what you get to see. Absolute class, absolute brilliance that has been brought on a big stage. And you also get to see the kind of Indian talent, the way they tackle these kind of situations. Meanwhile, while we're speaking about this, there is a substitution here that is being made. A change in personnel. Mohit Chauhan, he comes in place of Deepak Chaudhary. And Arvind, back to where he should be. Just a trial and error there before he begins this. Look at him sweat. Beautiful. First one converted. India's very own powerhouse gets another one here. The man himself, Arvind Annadurai. 60-61, Prakash Mishra and team, they're fighting. Remember, the battle is not over until the last second. There is a trump card to be introduced. And that can certainly change the complexion of the game. 1 or 2 players, if they can back those 3-pointers, I'm sure the Giants can do something different.
if they have some fuel in their tank still remaining, this is the moment to charge the battery. This is the moment to turn and up the gear. There it is. Anna Durai is not going to allow that. What do you say, Abudaya? आज अरविंद अन्नादुराई जिस तरीके से खेल रहे हैं, जयपुर उनको बिल्कुल भी डिफेंस नहीं कर पा रही है, चाहे वो रिंग के पास हो या 3 पॉइंट शॉट्स हो। ये उनका शायद दूसरा 3 पॉइंटर था इस गेम का, और उन्होंने रिंग के पास जितने शॉट्स कन्वर्ट किए हैं उसका तो कोई काउंट ही नहीं है। जयपुर अपने शूटिंग पे डिपेंड कर रही है, लेकिन उनकी शूटिंग उतनी अंदर नहीं गई आज बॉल रिंग में जितना कि इन्होंने चेन्नई ने उस चीज़ को कैपिटलाइज किया और अपने लिए पॉइंट्स बनाए। जोगिंदर बॉल को लेते आगे बढ़ते हुए, जयपुर को अटेम्प्ट लेना होगा जल्दी, शॉट क्लॉक पे टाइम कम है, सिर्फ 3 सेकंड, और एक अच्छा पास और सत्यजीत छपराना ने एक अच्छा कन्वर्ट किया, 2 पॉइंट अर्जित किए अपनी टीम के लिए। एंटो बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए, जो आप अभी बता रहे थे एंटो के बारे में, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक खिलाड़ी का पैशन होता है, बास्केटबॉल उसका पैशन है, वो उसके लिए कभी उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते। दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दिस। जयसूर्या ने काफ़ी अच्छा शॉट लिया लेकिन मिस हुआ, रिबाउंड जयपुर के पास। जोगिंदर बॉल को आगे लेके बढ़ते हुए, उन्होंने लेकिन गेम का पेस थोड़ा स्लो किया है, और ये एक स्टील, लोकेश ने काफ़ी अच्छी स्टील करी और एक फास्ट ब्रेक, 2 पॉइंट्स और। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 95-63। चेन्नई अब बहुत आराम से इस गेम को जीत सकती है, बस उनको अपने डिफेंस पे ध्यान देना होगा और बॉलें खराब नहीं करनी होंगी, टर्नओवर्स नहीं करने। जोगिंदर बॉल को लेके आगे चलते हुए, उन्होंने बॉल 3 पॉइंट पे दी, 3 पॉइंटर अटेम्प्ट हुआ जयपुर की तरफ से, लेकिन ये मिस हुआ, रिबाउंड जयसूर्या के पास। Absolute conversion here, time to time. They're doing their best. Chennai Turbos now on the charge. And like Abudaya mentioned, it looks like a piece of cake. Just walk away with the victory now. They're wasting time, maneuvering the play all over. Anto Betley right in the center. The passion that we spoke about for him. Here he goes with a pass. All for Jayasurya, who's in that range. Almost a miss. Could have converted that. And there it is, Chennai Turbos. Today is their day, let me tell you. They've prepped them up so well that every player is contributing. On the defense, on the offense, all angles covered, Abudaya. Every angle that is there now. Jaipur Giants are not able to come back into this match. Even though it's on the counter, even though it's a fast break, even though there's transitional play that is involved, but still we're not able to see the Giants make a move. जयपुर की टीम प्रेशर में आ चुकी है, ये साफ दिखाई दे रहा है हम लोग को, और चेन्नई इसी के ऊपर कैपिटलाइज कर रही है। इस टाइम पे चेन्नई अपना गेम प्ले काफ़ी स्लो कर चुकी है, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि टाइम बहुत कम है और उनको जयपुर को कम से कम अटेम्प्ट्स देने हैं बास्केट कन्वर्ट करने के लिए, ताकि ये लीड मेंटेन रहे। और ये बॉल बाहर जाती हुई कोर्ट से, देखते हैं किसको बॉल मिलेगी। और ये टाइम आउट, जयपुर ने एक टाइम आउट लिया है। स्कोर है 95-63 एंड गेम में बचे हैं 2 minutes 33 seconds. Playing for some consolation here, Abudaya, just to try and get over the line. अभी कुछ बाकी तो है नहीं वैसे गेम में, just for some presence. Remember the fans that are there that have been supporting them throughout. बहुत बड़ी तादाद में, अगर आप राइट साइड पे देखो, बहुत ज़्यादा fans है. There are so many of them who've come in here to try and support the teams, and you'll see them in some time. Meanwhile, we're also seeing the trump card that's been introduced here for both the teams. Remember, points double up, only 2 minutes in the entire match, and once in the game that it can be utilized. And currently, if you're watching this closely, for team Jaipur, we'll be having Joginder, but let me tell you, the man on your screen is Lokesh from team Chennai Turbos. And Chennai have picked up Lokesh. Meanwhile, Jaipur have picked up Joginder Singh Saharan. Abudaya, क्या आपको लग रहा है कि स्ट्रैटेजी ऐसे होनी चाहिए, ब्लॉक योर ट्रम्प कार्ड एंड प्ले, और लेट्स कंटिन्यू द नॉर्मल गेम, क्योंकि दोनों टीम्स ने ट्रम्प कार्ड सेम मोमेंट पे लिए? दोनों टीम ने ट्रम्प कार्ड सेम मोमेंट पे लिए, क्योंकि लास्ट के 2 minutes 30 seconds बचे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जयपुर को इस टाइम पे भी स्क्रीन वगैरह देख के जोगिंदर को फ्री करवाना चाहिए, ताकि उनको कुछ ओपन शॉट्स मिल सकें एंड वो ट्राई कर सकें इस लीड को थोड़ा कवर करने की, जो कि इस टाइम पे काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि स्कोर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 32 पॉइंट्स लास्ट 2.5 मिनट के लिए बहुत बड़ा स्कोर डिफरेंस है। अभी जयपुर को बॉल बाहर से मिलती हुई, जोगिंदर बॉल को लेके आगे चलते हुए, वो गेम प्ले अपना सेट कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें स्क्रीन के लिए कॉल करनी चाहिए इस टाइम पे। एक 3 पॉइंट अटैम्प्ट,
एंड 6 पॉइंट प्ले, ये पॉइंट डबल होके 6 पॉइंट मिलेंगे उनको इस शॉट के लिए। एक फ्रेंडली रोल मिला उनको। जोगिंदर सिंह सहारन हमेशा अच्छे शूटर रहे हैं, वो आज भी वही करना होगा उनको आखिरी 2 मिनट में अपनी टीम के लिए, अगर उन्हें कुछ भी चांस चाहिए इस गेम को जीतने के लिए। There it is. Joginder Singh Saharan bags a 6. What an assist. What a player from the Chennai Turbos. Ritik there. Ritik Malik has been given a chance for the Chennai team because Anand Rai is now currently waiting on the bench, warming himself and calming himself down. New players here. Santosh TS also in the game and a foul that comes in. Is it time to bring back the men here? Bring back the boys. Joginder Singh Saharan. He wins another point here. That's been the strategy. Go into the key. Go into the paint. Try and get a foul as well. Remember that will also double up. And अब मैं आपको पूछना चाहूँगा इसी के बाद just right after this move क्या आपको लग रहा था कि ट्रम्प कार्ड एंतो पे खेलना चाहिए था? First one here converted by Joginder. Waiting to see if he can get another one. Remember 2 points for each because he is the trump card here. They double up. Focus. Converted there. Excellently done. And let's get to Abudaya. मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प कार्ड कभी कभी काफ़ी डिसेप्टिव भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर हमने लोकेश को ट्रम्प कार्ड बनाया है और इस वजह से एंटो के ऊपर से लोगों का फोकस कम हो सकता है। एंटो अपना जो शॉट कन्वर्जन अच्छा चल रहा है उनका वो कंटिन्यू कर सकते हैं। हमेशा ये नहीं रहेगा कि ट्रम्प कार्ड ही आपको स्कोर करके दे, क्योंकि टीम्स भी स्ट्रेटजी समझती हैं दूसरी टीम की, हमें दूसरे ऑप्शंस भी उसकी वजह से ओपन मिल सकते हैं। और एंटो उसी तरीके के प्लेयर हैं, आज उनको सारी बॉल अच्छी कन्वर्ट कर रहे हैं और इसी के साथ उन्हें फ्री शॉट भी मिले हैं। लेट्स सी कि वो कितना इसमें स्कोर कर पाते हैं या नहीं। एंड पहला शॉट उन्होंने कन्वर्ट किया। इसलिए आपको क्या लग रहा है आज एंटो ने कितनी बॉल मिस की होंगी? मुझे तो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। ही हैज़ बीन वेरी एफिशिएंट टुडे। दूसरा शॉट मिस हुआ, कमेंटेटर्स कर्स। जयपुर को बॉल मिलती हुई। Absolutely, Abudaya. It's just that one hit that he has got. A little upset there of Prakash Mishra, but showing some sportsmanship. And Antobetley hasn't missed many, like you mentioned, Abudaya, just that 1 or 2. थोड़े से गेम में हो जाते हैं और आखिरी 1 मिनट इस गेम के। Let's wait and find out what happens here. Oh, brilliant! This is massive here. Another 6 points. What a game this is turning out to be. Joginder Singh Saharan with another one here. 3 points. Beautiful play. Can they get the job done here? Entering the last 1 minute. क्या लग रहा है अबुदया, कैसे एंड होने वाली है ये मैच? अब सिर्फ लास्ट का 1 मिनट बचा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जयपुर को अपना ट्रम्प कार्ड थोड़ा पहले प्ले करना चाहिए था, क्योंकि जोगिंदर सिंह ने पिछले 1.5 मिनट में 16 पॉइंट स्कोर करके दिए हैं अपनी टीम को, और ये एक और अटेम्प्ट था जो मिस हुआ। अब चेन्नई के पास बॉल, उनको अपना टाइम मेरे हिसाब से थोड़ा यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन एंटो ने एक और शॉट कन्वर्ट कर दिया है। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 179 और दोनों टीम के लिए ट्रम्प कार्ड भी डीएक्टिवेट हो चुका है। जोगिंदर सिंह सहारन ने एक और 3 पॉइंटर मारा है, जो कि थोड़ा सा लेट हो गए बस, वरना इसके भी 6 पॉइंट मिलते हैं उनको। द लास्ट 24 सेकंड्स इन द गेम और स्कोर है 182। मुझे लगता है चेन्नई को अपना सारा टाइम यूटिलाइज कर लेना चाहिए, जो कि वो कर रहे हैं। एक काफी अच्छा फाइनल देखने को मिला दर्शकों को, और चेन्नई ज्यादा अच्छी टीम यहाँ पे साबित हुई है और इस गेम को जीतते हुए वो लोग। That's it then, the last 3-2-1. That's about it. The game has come to an end here. It is the Chennai Turbos that win this match. What a day this has been, what a game, what an atmosphere. Jaipur Giants versus the Chennai Turbos. Friends, it's been a cracker of a contest in the preseason of the Elite Pro Basketball League. You'll never get to witness this anywhere else in India. The first of its kind, and presented to you, packaged to you in the perfect manner. Friends, we've enjoyed as much as anyone else has. Seen some premium talents come in every day, given their 100%, perform at their best level. Remember, they've had matches one back after the other. They've come in, they've trained very hard, still managed to go and do their bit. And it's not easy, let me tell you. The fact that they have to perform time and again
put up a show on the big stage. Big names like this, Anna Durai, Vijay, Ritik Malik, everyone's gotten a chance. Jaya Surya, Anto Bethley, the men in yellow, they've taken charge, they've upped the ante. And certainly we must say that they're giving the applause there to the fans. Look at that. That is the kind of presence that the fans get. What a view that is. The fans really love that. They enjoy it much as anybody else in this game. Not only the players, but also the fans that make this team. Jaipur Giants that have really pumped the audience up. And Prakash Mishra, the man there who's been driving the traffic for the Giants. Look at that boy. He enjoyed this as much as anybody else. That's about it then. What a fantastic and cracking contest this has been. The amount of people that have come in here to watch this encounter in large numbers. 100 to 82. That's been the scenario then today. That's it, friends. You've been an excellent audience here. We'll take a break here in the commentary box. That's been good night from us, me and Abudaya. We'll see you, as well as on behalf of Niti Rawat and Vijin. That's going to be good night from us. We'll head onto the court as we have Tarasha, who will probably bring us some interviews. Stay tuned. Just before we go, once again, the highlights are brought to you by the EPB League, powered by Mogo. Look at that there, constant points, constant amount of connections here. Every point was converted in time. They did their bit. They went in for that really nicely. And there it is. The highlights really pumping the entire audience up. Lokesh, he made the most of every opportunity. Tried to get those points on the board. And there was a massive, massive encounter. That's it then. That's been the story from our side. That's how things got over. We'll straight head to Tarasha. Turbos, congratulations, sir. How's the team feeling? It's good. Thanks a lot for the player have done and played a well match. In the starting itself, they just went with a lead of 20 points, with which we succeeded in the match. क्या सिखा के आए थे टीम को? कौन सी strategy बना के आए थे that it was a one-sided match? They are well experienced player and they know much more and they know how to play them. They don't need that much of the advice for us, but we make a strategy that from the starting itself we have to take the lead and it will go like that. So any words for the Chennai fans out there looking at the screen? Very proud of the team. What do you have to say to the fans out there? I just want to thank the audience who were supporting us for the Chennai team, and they have played and they have just make their audience appreciate for that. Now the season has come to an end. आप सबसे ज़्यादा क्या miss करोगे elite के बारे में? I will miss all the platform which the elite have given to all the players, and such kind of platform we need to just move up for our players. Thank you, sir. We'll see you on the main season. Congratulations to Team Chennai Turbos. That was an amazing end to the whole league. Chennai Turbos, winners of Preseason 1 Elite Pro Basketball 2023.